Okay, I think it's here. Okay. Okay, is that on? Is that on? Okay. So, thank you so much for this. Are you going to say something, or should I just? Voice is low. What was that? Your voice is low. My voice is low. Yeah, I think you have to. Now it's okay. It's better. Thank you. You going to say something, or should I just have an issue? Yeah. All right. Thank you. Thank you so much. It's great to be here. Third time. People say, third time is bliss, or few other things. Thank you so much, Dr. Gumasta. He has been such a great inspiration for all of us. Not only that he works in the field, which is most important, but he writes in the field, and he organizes, and he takes all the trouble to get us here. So I really want to give 3 cheers to him for doing this all the time. He's so busy that he really did not put this topic on your list, because he said that he didn't even understand what I was trying to say. I did send him the topic. So he said he had no idea what I was trying to say. So I hope I can make sense about it today. So, Ram Raj Baithe Trailoka Harsid Bhai Gaye Sab Soka. The important thing is, the Ram Raj was not only in Ayodhya. It was for all 3 lokas. So we have to take not just this world view, but all the world's view of whatever. And then, of course, everybody else knows, Bairun Kahus and Koi, Ram Pratap Bisamta Koi. If the communists are looking for an Indian ideology, all the Bisamta means no differences in people. The people were treated same, just like what communists try to say. And then he says, Varnashram nij dharam nirat ved path log, chalahi sada pavahi sukhahi, nahi bhai sok na rog. There is no, perfect health, that nobody was sad, nobody was depressed. Some of my doctor's friends might not be very happy about it. But दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का नहीं काहू व्यापा सब नर करें परस्पर प्रीति चलें स्वधर्म निरत श्रुत नीति. This is, people say there is quite a bit of discussion, Valmiki Ramayana versus Tulsi Ramayana. Tulsi Ramayana is the extract. He started writing this when he was 75-year-old. So he had seen the world very different. He wasn't the commentator. He was not giving commentary like Valmiki was, because he was seeing the things. Tulsi Das had opportunity to think about it, integrate. So you can just see the Swadharma, Shruti, Niti, all these things are in part there. Nahi daridra ko dukhi na deena, nahi ko abudh na lakshan hina. So anyway, you all know this. I'm just presenting it just to make sure that this is not only this world. When I said this, where the world is parts, which was predisposed for Ram Raj, it could be all 3 lokas. So this world is kind of simple. I want to start with Jabali, because Jabalpur, we are in Jabalpur, and I understand I missed yesterday. Swamini Amrita mentioned about Jabalpur quite a bit. But Jabali in Ramayana was actually at odds with Ram. So Jabalpur is a good place to be at odds with people, because, it is in his name. He was considered atheist. Atheist means, somebody who didn't believe exactly in Vedas or some of our sages or gods, Brahm. But he was a very practical person. I could be one of those people. So I like it. I think this is great to have a discussion. Most important thing is, in Ayodhya, it was allowed for people to have differences like that. And that's very important. So then there are other things. Jabali, there are so many Jabalis, and obviously he must have been great enough for people to name Jabali their kids. In Skand Puran, it's Rishi Ratadhwaj. He was a son of Rishi. And then he apparently was during Krishna time also. And finally, in Chandogya Upanishad, there is so much written about
Satyakam Jabali. So I think Jabalpur is a good place to have this kind of meetings, and I'm very, very happy. So I tried to go around Jabalpur to see what the situation is, because Ram Raj is something that, you really do it. So I went out yesterday looking for what is in Jabalpur. I saw a pakauda dukan and surrounded by pathology center. That doesn't sound like Ram Raj Baithe Trailoka, right? So, so it is important. Dr. Gumasta is a doctor. He does treatments to everybody. And I think we need to find a way to bring this situation, this deep thinking of Ramayana, which has at every level you can understand, from physical to subtle level to causal level, something that Jabali actually was talking about quite a bit. So we need to get some lessons. I was wondering yesterday very aloud whether during Ram time there was a conference hall. There wasn't. So it's okay to have a conference hall, but we should always remember where we need to go. And which is, Ram did everything in his life just doing it. He hardly ever gave a lecture. So I'm sorry that I'm giving lecture about Ram when he really never gave a lecture about anything. But I hope that we learn the lesson. If I make a mistake, then you just don't make that mistake. Now I want to talk about India. Why only India claims God to be born. Nobody else in the whole world ever claimed that God was ever born. And I'm from Uttar Pradesh. I'm actually from a village near Ayodhya. And all the gods are born only in Uttar Pradesh. Ram, Krishna, Shiv. Why does happen? Many people ask me that in America. I said, God, rest of India is good enough for God to send somebody, some Sankaracharya, some messenger, some guru, some yogi. But Uttar Pradesh is so bad that he has to go himself. So Uttar Pradesh is not easy to handle. Yeah, Santanuji is a big fan of Uttar Pradesh, so I think he's clapping. So anyway, there is a Prakriti, and there is a Swadeshi, there is a Anveshan or search. You search for things. And then there is a research, which is something like we do. And then there is a Vyavasthikaran, means you need to organize, and that's what is called scientific. I happen to be a scientist. And then you have to express Abhivakti. And then you translate. And Jeffrey Armstrong, Kavindra Rishi, will be talking more about translation this afternoon. It's very important aspect to translate. And that's called scientific culture. That is what India's actually constitution, only India's constitution says, Article 51A, that the citizens it's a duty of citizens to develop scientific temper. So you can question anything and everything. There is no problem. And that Jabali thing fits in there. Now, India is a very, very, very unique country. The only country in the world that does not get affected by ice age, because Himalayas are there. Himalayas there, so the ice age does not affect. Europeans are different because they are affected by the ice age, with the cold weather. Indians are not, because the South Pole also has cold weather, but the ocean absorbs that. North Pole has cold weather, Himalaya stops it. It's just almost like made by the creator. For this is a very unique place. And this unique place started 71 million years ago. It was actually, India used to be part of Africa, and then moved 10 million years ago to Asia, and then it slammed in Asia, and the Himalaya is still growing, about a centimeter every year. It's still growing. So this is, people say being born in a Hindu is a very important, and Kavindra Rishi might explain it a little bit differently. But Hindu comes from Sindhu, which is really talks about the geography. And the geography here is so benevolent to people that the culture has been there for a very long time. And so rest of the world can also take lesson out of it. And that part is, according to population genetics, humanity started in Africa. It's nothing to do with this one, because humanity is only 200,000 years. But for some odd reason, they went to India, that to South India.
And South India, they're 65,000 years ago. And if you see everybody else, including Arabs, North Africans, Europeans, you can see these numbers are those many thousand years, even Chinese. So it looks like a good 10 to 15,000 years humanity stayed in South India. This is just a fact, and I didn't create it. It's just current scientific research. So that shows that everybody has an opportunity to live in India. Now what that had led to, there was a discussion yesterday, I think, Trivedi ji was talking, Sudhanshu Trivedi was talking about, Ayodhya's princes went to Korea, and the whole all Koreans are very obligated. And he did talk a little bit about Italy. He talked about Rabbino, I think the city of Rabbino and the Ramanas. Well, I want to present something very interesting to support my hypothesis. There is a Makar Sankranti coming up very soon. And that is always happens at 14th or 15th of January. Now, interesting thing is, all over the India, it is celebrated in different names they give. In our area, they call it khichdi. They make khichdi. It's interesting, most of the celebrations in India are after the harvest of something. The rice, I come from a farming family, rice is harvested sometimes in November, not in January. But I have a friend, Partha Sarthi, from Tamil Nadu. He said that in Tamil Nadu, actually, there is a harvest of rice in January. So this Pongal thing comes from South India. And we have, in North India, an interesting thing is there is a dish called risotto, which is a Milanese. My daughter now teaches in Bocconi University in Milan. I recently visited her. So I went there to have risotto. This is just like khichdi. They eat khichdi, call it risotto. It's very interesting. Now the point is, what is common between Italy and India? Well, I have a good friend who is a neurobiologist actually. We did some work together in Madison, Wisconsin, and he told me 30 years ago that some Italian think that they came from India. 30 years ago, his name is Giampietro Schiavo. He said some Italian thought that they think that they came from India. Now, interesting thing is, I was walking around with my daughter and son-in-law. I found a Mandodari bookstore in Milan. So there is so many other common things. There are some words and other things. But what I'm trying to say, this culture has spread throughout the world, the Ramayana culture. Why Ramayana culture? I'll come to that. I want to talk about the human, the word human that has a man in it. It has so many aspects of these things. And why is that culture important to learn is that man, human word comes from man, Manu. Manu and Satrupa, where the king and queen in Ayodhya. And those Manu and Satrupa are the origin, according to Indian cosmology, चाहे पौराणिक कथाएं ले लें या कि सृष्टि की उत्पत्ति के रूप में देखें, तो मनु शत्रुपा जो हैं हमारे सारे लोगों के पूर्वज हैं, और वो उनका राज कहाँ था? अयोध्या में था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उसी का मैप है, ये नेशनल जियोग्राफिक में जो हमने आपको पहले मैप दिखाया उसी का दूसरा रूप है। उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि वहाँ पे जो बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में एक द्रविड़ियन राजा को मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु एक मछली के अवतार में उनको he brought them from South India to North, and that king was Manu, and he is the one who established his kingdom at the river, at the bank of river Saryu, and that's Manu and Satrupa. So this whole entire humanity comes from there, and that's why even Italians think that they came from India. What are the elements of Ramraj? Well, if you want to really talk about Ramraj, keep your word. Prana jaye par vachan na jaye. And then you have Ram in
various conditions where he keeps his words, and he does what is known as welfare of others. Parahit saris dharma nahi bhai. These are examples. I don't have time to go through this, whether it's meeting Sugriv or Sabari or so many instances that you have been knowing. Parahit saris, he always considered others' welfare as a supreme. And he had spent all his life for that. So if you have to act according to self-reliant, independence view of free praja. Praja is very important. It has to be self-reliant if you want to create a system. First you behave yourself, and then you create a system for people to do like that. And so you see, that's why praja, the dhobi, the washerman context that comes in during Ram Raj, where Ram had to listen to praja. He was totally dedicated to praja. Now, the world has world orders, all over the world orders. Samuel Huntington of Harvard University had his own theory of world orders based on religion. I did some research, and I don't have time to really explain this data, but I have done some research where India is always, the boys are preferred here, and the girls are not taken care, all that. I did this research in 2002, and I found the at birth natural rate of boy versus girl in India is one of the perfect places. Number two, more important, that natural ratio from birth to death, India along with some of these Middle Eastern countries, Iraq, Iran, and some of the, this is India green, this is green, this is green, rest of them are deviated. So basically you maintain the natural ratio of people, which means that you take care of people as they are. So when we talk about civilization, that's called civilization. The Manu and Satrupa, like I said, during Matsya Avatar, he was moved, he was a Dravidian king. It's very important to know, because as a North Indian, I always had this misunderstanding that everything happened in North, and Dravidians, the Tamilians, they just speak Tamil language because they're so fanatic about it. But that's not true. The important thing is, like I said, the food comes from the pongal and khichdi and risotto comes from there, and they come from there. And then what you see, and now next one is the language. Tulsi Ramayana is written in Audhi. It's not because he couldn't write Sanskrit. It's not because he couldn't explain in Radheshyam Ramayana was beautifully presented yesterday. But abhi aapko dekhenge, if you have Hindi movies, and Mali and Dudhwala and Rasoiya, all of them speak Audhi. Why? Because that's true. They go in Bombay and that's all they do. So to get an impact, communication, this is a communication style. Tulsidas was the best director. He wrote everything in Audhi because that's stories of ours. It has to be written in Audhi. But then everybody sees that that's perfect. Because if I'm Ayodhya, I'm from Ayodhya, and there is when I go to different countries, including Taiwan, Thailand, the moment you say that you are from Ayodhya, they immediately pay respect to you. Just because I'm from there, I don't have any qualities of that. But the same is true for Audhi language. The interesting thing is, I believe, and some of these Sanskrit scholars, including Kavindraji, might disagree with me, I believe that Ayodhya is the origin of everything. Audhi language has to be the origin of every other language. If Manu Sadrupa were there, then it has to be from there. But also we have to think, the Sanskrit is the most organized, most scientific language that has been put together to absorb all of it. And that's what Europeans call as Indo-European language or English today. But if Audhi is the language of Manu Satrupa, and Manu Satrupa came from Tamil Nadu, then there should be some connection between Tamil and Audhi also. And I tried to find some, like Amma is very common, Appa is Bappa in Audhi, and interestingly, Pillai means chota bacha. It's like little baby. In Audhi also they call Pillu. So there are some common words that comes from Tamil to Audhi. But more importantly, you can read this. I have tried to come up with Audhi words connection to English, but not to Sanskrit. And in that one, I have the first one is Nani. Is Naini word in English, but in Sanskrit it's called Mata Mahi. I'm just going to give you a couple examples. You have Neek.
There is a word neek in Audhi, and that is nice. But in Sanskrit, it is Subham, I think. Yeah, Subham. And then there are many other ones. One of them is not written here. I think, yeah, it was written here. Farch. There is the word farch in Audhi, which means nobody has touched it yet. And that's in English word is fresh. Whereas in Sanskrit, it will be something like new or suddh. So there are, it seems like the people probably moved, like I said, 65,000 years ago. From Audhi was, Manu Satrupa's culture was important, and Ramayan's culture is still going to be important for that. So I have a suggestion. Suggestion is that, you need to think of the Vesti, like India is a Vesti, or individuals could be Vesti, and then you have a society, and then you have environment around you, which all affects, society affects, and everybody affects each other, and then there is Samasti. When we talk about Triloka, that's what the Triloka is. And it's in thermodynamic sense, it is called as system and surrounding. Wouldn't go into detail of it, but this is equivalent to Yat Pinde Tat Brahmande. Yat Pinde Tat Brahmande is also the same thing as system and surrounding in second law of thermodynamics. And the way we say we are Vasudhaiva Kutumbakam, so then the whole concept of nationalism does not fit. Because if you are Vasudhaiva Kutumbakam, then you cannot be nationalist. You have to be internationalist. So I suggest that India must change its instance to internationalism through duty and service to humanity. And I do some research in Ayurveda, and Ayurveda is a very, very deep science, and that can explain the connection between the birth of this universe and the end of this universe. So if we use that as a means, I think we will be able to convince people and get there. Final couple of points. As you know, the Raghuvans, this is Kalidas has written Raghuvansam. We used to have a concept of Chakravarti Raja. Chakravarti Raja never went to take over somebody's land. Only they established Nyaya. It has to be justice. So if there is injustice, they are willing to die for it. But the whole world, like what might be doing United Nations supposed to do today, but we had Chakravarti Raja, and in several were in the Vikshwaku ones. And so that, what were their things? Parahit saris dharma nahi bhai, par pida sam nahi athmai. They would not tolerate injustice against anybody, anywhere. And that not only limited to human beings, by the way. And then they kept their word, Raghukul Reet Sada Chali Ai Prana Jai Par Bachan Na Jai. With this, it's very interesting thing, it's just a lighter moment. In America, there is a dollar bill, it says, in God we trust. In India, it says, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूँ. In God we trust, अगर if you want to translate in Hindi, वो उसको कहते हैं भगवान भरोसे. और जो whole system that is running about GDP, stock market is भगवान भरोसे. So we need to get back to ours. And the system that is created for doing that is Prajatantra, I briefly mentioned, which does not go around and govern the rest of the world, which only taking over controlling does not take over controlling anything, not for keeping for the next generation, none of that, It's just you establish justice and that give people independence. I have written a book, in case you get interested, a different take. Some of my ideas are in there. The title of the book is in an NRI view of India in the tradition of Ram, Krishna and Gandhi. And you don't really need to read the book if you understand the title. It's the tradition of Ram, Krishna and Gandhi. And they were also NRIs, by the way, because Ram went to Lanka and the cultures minister is not here. But he was an NRI at that time because he was in Sri Lanka, and that's where he said, Janani Janmabhumisya Swargadapi Gariyasi. Krishna also did the same thing. He left Mathura and then he went to Dwarika to protect. And some of us have gone outside, but that doesn't mean that we are not taking care of India. I think we hope that we will be able to bring India further down to people through our own actions. They see our own actions and they believe in it. So final word I wanted to say this, what is this praja? The Vedic society had this Brahma Vyavastha, I talked about that, in which
They now somehow they think the Sudras are not as great. Actually, Sudras are the best people. If I have time, I will try to convince you for that. But unfortunately, I don't have time. One of the problem is, in Bhagavad Gita says, Chaturvarnyam maya srishtam gun karma vibhagasa. And then there is a chapter 18th, slok 44, it says, Paricharyatmakam karma sudrasi api swabhavajam. Many times you look at this, they say, शूद्र का काम है सबकी सेवा करना. इसमें ये लिखा हुआ है शूद्र से अपि, शूद्र का भी स्वभाव है. इसका मतलब ब्राह्मण का भी होना चाहिए, क्षत्रिय का भी होना चाहिए. बस सेवा करना सबका होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए. अगर सेवा नहीं कर सकता है तो वो कुछ नहीं है, ना वो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय, वो सवर्ण हो नहीं सकता. So there is a misunderstanding we have created in both in understanding intellectually, scholarly, and also in practicing. If we change that, we will find a way that India will be seen as a chamatkari, the place where all the Bisuguru concept and other things will come. And my final slide is that Sudras, just to convince that Sudras are known as Praja. Prajapati is Brahma. Sudras known as engineers, doctors, professors like us who provide service. I and Kavindra Rishi had some conversation very early on, 15 years ago, about this. This Sudras are the one who can be gods. They can be the Prajapati, they can be Vishwakarma. You do not have other people to get there. So being Sudra is they are creative people. They are the one who really create this world. And so if we want to bring Ram Raj throughout the world, it will be through this self-reliant work, creative work, which is what was in the Ram Raj. And I find the spots, unfortunately, I just showed you it doesn't look like Jabalpur is the right place to get Ram Raj. You just saw Pakoda and other things in there. What you will see, I find in India also, people say a lot of things, but they don't do it. Most of the time, bureaucracy, anybody you just look at, most of the time they will say something and do something else. What I find in the Western world, particularly in America, at least whatever the rules are written, they are for everybody and they will be doing it. So if they learn more, you will find that you will be importing Ram Raj from America someday. And there is a time for us to improve ourselves, practice, and become and learn something from Dr. Gumasta, who is doing all this. And thank you all very much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर बलराम सिंह जी. बलराम सिंह जी से आपको यदि कुछ पूछना हो, कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करना हो, तो अभी हमारे पास 2 मिनट का समय है. We can ask any question related to. Yes, please. There is a hands up there. Many thanks for your wonderful contribution throughout this program and in the earlier conferences as well. And where can we get your book? These days online, it's MLBD publisher. MLBD is publisher. Amazon.com is everything is available. Okay. Thank you very much. सादर धन्यवाद प्रोफेसर बलराम सिंह जी. आपने बताया कि हमारी सोच बड़ी गहरी होना चाहिए, जैसी जाबाली ऋषि ने की, जैसी हम खोज विज्ञान में करते हैं. और आपने ये भी बताया कि हमें स्वयं सक्षम होने के लिए ये आवश्यक है कि जो हम कहें उसका अनुकरण करें, उसका पालन करें. वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता दोनों का अद्भुत समन्वय जब तक होगा, तभी हमें प्राप्तियां होंगी, सुनिश्चित होंगी, शीघ्र होंगे. धन्यवाद प्रोफेसर बलराम सिंह जी. अब हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर शिवानी शर्मा जी को, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से. प्रोफेसर शिवानी शर्मा. ओम आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Let me begin by thanking the organizers, the team, entire team, for giving me this opportunity to be here and to share my thoughts and views.
with regard to the subject, which is not only academically challenging, but also it demands us to be critically evaluating some of the fundamental concepts of faith and reason, fact and value, myth and reality. But before I start with the presentation, I wish to take a moment to express my heartfelt gratitude towards my old friend, Swami Gyaneshwari ji. As per the cosmic plan, we had our pathways crossing way back in 94 to 96 as students of post-graduation in philosophy. And we have sweetest of the memories together. Not only this, I'm not sure if she had visualized such a glory to herself at that point of life. But yes, I can say this with conviction that I had a firm belief in the choices that she had to herself, the choices she made in her life, and her dedication spoke for herself, the kind of conviction that she had for the program that she had adopted for her lifetime, in fact. So I take pride in her as an individual, as a leader, and as a sannyasi who is now more like an anasakta karma yogi. And I wish her well. And to all the didis that I see in front of me, way long to go for you all. I wish you all Abhyuday and Nishrayas. Having said this, the title that I've picked up for myself as I teach Indian philosophy and aesthetics especially, so it was the fundamental aesthetic concept that is shokah shlokatvam agatah. And the closest translation from Drayden I could borrow was that piety melts the mind to love. Although I'm not very convinced with the translation, but still I think it serves best when it comes to poetic expressions of the philosophical truths, because I also believe that philosophy in itself is a very dry subject. It really needs some blessing from Sahitya, Kala, and of course history also, in order to have some grounding in factual orientation of itself. So when we talk of Ramayana, and when I say Ramayana, I'm referring to Sri Valmiki's Ramayana. And we find that there are a number of rasas. As Navadha Bhakti, we also find Navarasas. And all these rasas are found in Ramayana, but Karuna Ras is the foundational, one of the foundational rasas. Compassion is the foundation of Adikavi Valmiki's Ramayana. And especially the phrase that is Ma Nishad, I mean, entire world has deliberated on this phrase, that it is, it has the affluence of dhvani, that is suggestivity in it. And Karun Ras reaches its peak when we see that when Sita takes a vow and she disappears into the womb of earth. And Bhav Bhuti in his Uttaramcharit has to say that Eko Rasaha Karuna Ev Nimitt Bhedat Bhin Bhin Prithak Prithak. बहुत सारे अलग अलग उसमें रस हो जाते हैं, but the foundation ras is Karun Ras. There is, of course, debate. There are other schools of literature whereby, you know, Shantaras is also said to be one of the foundational rasa. But in the present context of Ramayana, I think Karun Ras is aptly, it aptly justifies that, yes, Karun Ras is the foundation of Ramayana. And as a poet of nature, Valmiki also believes that nature and life are not disconnected. And if it is,
when he says that it is a twin blossom. Nature and life is a twin blossom of the creation. And if human life is disconnected to nature, and if nature is disconnected to life, probably there are chances that we fail to understand the meaning of life. And also the final connection between nature, that is Prakriti, and human life becomes more meaningful if it is connected to God. There are certain references I'll be quoting, and probably this is the reason why that this human connection and connection of nature with God that can be seen in the arambha of any kavya or natya parampara, that is in the form of Mangalacharan we see, and as a Bharatvakya, that the author of any kavya would leave us with a Bharatvakya in the form of moral message, that as a takeaway message. So, and when we come to Ramayana, and especially Valmiki's Ramayana, among the celestial phenomena he describes with equal felicity morning, evening, night, moon, and stars, and graha nakshatra chandrarka tara gana vibhushite vitane jivalokasya vimale brahma nirmite. That entire cosmos is a creation of Brahma. Brahma has created all the grahas, nakshatra, chandra, tara, and so much so that we see there is a mention when Valmiki writes that he who seeks the peak of Chitrakoot mountain, he attains auspiciousness, and that his mind will be automatically turned away from all kinds of evil and sins. For the sake of, because the paper is lengthy, so for the sake of time management, I've just jotted down a few points. The description of Pampa and its surrounding forest is another highlight of Valmiki's Ramayana. He compares blossomed Karanakar tree to a man who is bright, who is laden with bright gold ornaments and cladded in silk. The poet is fond of describing lotus and rivers time and again, and when he sees a beautiful woman, his imagination runs to the moon and lotus, and also, not only moon and lotus, it has become a trait of Indian art and literature, which has gone deep-rooted with the tradition. And that is how we see the Upama in form of similes. In Ram and Sita, he has embodied the highest ideals of beauty. Ajat Vyanjanah Shriman Padma Patra Nibhekshanah Ekasra Dharo Dhanvi Shikhi Kanakamalaya Shobhayan Dandakaranyam Deepten Swen Tejasa Adrishyat Tato Ramo Balachandra Evodita. Valmiki is not only a poet of nature, he is also, his poetry reflects criticism of life, whereby I'm trying to evaluate the ethical values that he's trying to lay down for us. There are some meaningful messages to share. He teaches that a person who, very fundamental messages, he teaches that a person who rises early morning after a sound sleep is free from drowsiness and fatigue. He advises to control our passions and impulses, and warns us not to cast off good people from our lives. He tells us that many persons will speak pleasant things to us, and this is for our younger generation at the back. He tells us that many persons will speak pleasant things to us, but very few will speak or hear true but unpleasant things. Sulabha Purushad Rajan Satatam Priyavadinah. He teaches that a wise person should always have foresight and be forewarned and protect himself against evil. Anagata vidhanam tu karatavyam shubhamicchata apadam shankamanena purushena vipaschita. We must not bear too heavy burdens in life. We must eat only such food as we can easily digest. We must do things which will not bring righteousness or fame. Another wisdom, life is short, life and death are unpredictable. We must do only what is good to all. We must not be too friendly nor too unfriendly. Golden mean is the best way. And now I
I'm reminded of Aristotle when he talks of virtue as a middle path. I'm reminded of Lord Buddha when he talks of Madhyam Pratipada. So the poet also says that he is a bad man who promises and fails to carry his word to the person who has done good to him. He teaches that if a person is kind in his word, none will harm him. Nahi samupapannanam praharta vidyate kvachit. He teaches friends must share good things. The noblest law of life is the law of tenderness and compassion. Papanam va shubhanam va vadhahanam plavangama karyam karunamarthena na kaschinna paradhyate. He affirms that men err when fate marks them for misfortune and refuse to take solution, advice, take a salutation or advice from men, and men are instinctively afraid of new and strange things. He says, prosperous persons will not bear the praise of others in their presence. Riddhi yukta hi purusha na sahante parastvam. Nearest relatives are always jealous and spiteful. It is easier to make friends than to keep them, because human nature is fickle and friendships are often seen to break over these trifles. Sarvatha sukaram mitram durlabham paripalanam anityavach chittanam priti ralpet bhidyate. And strong men, they seek strong men, the company of strong men. Babhuvu balavanto hi balavantam samashritah. It is only noble and unselfish natures that have fast friendships, and that there is no real comradeship among persons who are full of pettiness, meanness, jealousy, and selfishness. Another cynical truth, I would say, a person who leaves his community and seeks the aid of strangers will be discarded by his own community and by the later ones after his own community is ruined. So life is a speeding stream, but yet we have our birthright to bliss. Sugriv has a sudden and strong fit of remorse at the grief after Vali's death. Sri Ram does not make his grief an occasion for a sublime exposition of ultimate truths of life as Sri Krishna did to Arjuna's grief. He was rather smitten by and he was more sympathetic in grief with Sugriv and was in tears and was silent for a while. He then pacifies Sugriv by saying that all is controlled by fate. Niyatihi karanam loke niyatihi karma sadhanam. But are we slaves, when Sugriv asks him, are we slaves of this pitiless destiny? Then Sri Ram has to say that no, dharma is eternal, soul is eternal, and Ramayana's idea is that life of the soul is not limited by the life of body. This certitude of paralok and of its being won by moral life runs throughout this poem. I understand that as students of philosophy, we are trained with skepticism, we are told that every method, every concept, every doctrine must be, if Ram occurs to us or appears to us as a history or a story. But I'm reminded of my father once suggesting me, why do you even ask this? Why this question even comes to you? Not only as a student of philosophy that we have, given you this, not to, but belonging to a Sanatani parampara, this question even shouldn't arise in your mind. But I think I'll be faltering on my duty as a teacher of philosophy just to accept for the sake of accepting things. So this question was resolved while reading literature, while looking into the references. And there was a reference that there are 79,000 years ago, but I think I found little more in the textbooks. When I read K.S. Ramaswamy Shastri, he has to make references some more than 8 lakh
a million years? The second question is, apart from if it is a history or a story, the second question is, how does it contribute to me as an individual and to the society at large? And certainly, therein we do fall in the trap of mythology and metaphysics, reality and myth. And I think there are a lot of messages that one can draw while reading Ramayana as a text. And of course, Tena Tyaktena Bhunjita has been the central locus of either we say that it is from Upanishads, or it is the message equally of Bhagavad Gita, it is equally a message of Ramayana also. But I think, and the third question that I wish to address is, why do humans seek divinity? Why do we need divinity in our lives? And I think these are the fundamental questions. And just to wind up, there are few last questions which, on the basis of Ramayana, Valmiki Ramayana, that as a citizen of India, we must address what kind of, when I read, on human rights, there are 30 articles in UN, United Nations that we read with regard to human rights. And these are the questions when Valmiki is asking. It shows the concern a king must have for his praja. Valmiki asks, if in his current times, intelligent people who follow dharma are duly respected, 2.100.9 for your reference, please. If eligible, Shastraveta, knowledgeable, intellectual, self-controlled and efficient people are being posted as ministers and administrators, 2.100.15. Are ministers able to withhold the planning and confidential discussions with regard to the development of society? Is there any delay in executing the policies and decisions taken by the authorities? Are the administrators non-corrupt and morally upright? Does the subject or the society bicker about extra tax being imposed by the administration? Are the women safe and secure in the society? Is the public opinion about the ways and methods of punishment consensual, or is it being criticized? Are the birds and animals in the state safe and taken care of? Is the finances of the state in wrong and unsafe hands? Does the state ensure an impartial hearing and justice? Has anyone who is innocent been punished because of authorities' greed? One must observe, and there is a long list, one must observe and ask if the values Indian Constitution upholds are actually Indian in their character and nature or not. The Indian Constitution, while it claims India, that is Bharat, aptly defines what India and what Bharat refers to independently. The difference between the two is that of the very nature and the aspirations of community or class that is reflected in the cultural and spiritual values Indians have been looking up to in the name of Purusharthas. India as a mandi or business market and Bharat as a mother nation have absolutely different connotations, which must be understood and highlighted. All the 30 articles of UNO under the human rights are nothing but treating nations as markets driven highly by economy. Ramayana, on the other hand, displays the list of duties a king ensuring material and spiritual welfare of the subjects. When nations are treated as business centers and human beings are surely replaced by a lopsided value alone, that is, artha deprived of dharma. Valmiki states in Yuddhakanda and Aranyakand 9.30, 23.9 that out of Trivargas, one must not treat one as superior. One of the dharma must not, one of the purushartha must not be treated as superior to others, and dharma should remain the foundation of artha and kam. Legitimate wealth and enjoyment must seek its roots in dharma. I would say, just as a concluding remark, that I'm reminded of
Aditya Hriday Stotra, whereby Ram is also has gone under depression and he seeks Rama Rama when he's been given, as a Aditya Hriday Stotra comes to him as a solution to the situation. Rama Rama Mahabaho Shrinu Guhyam Sanatanam Yena Sarvan Rinvats Samare Vijayshase, whereby he's been told that grief is a phasing state, whereby grief touches everyone us in life, but it has to be handled, it has to be taken care of by your own integrity, by your own determination. And with these words, I request and pray once again for all of you. Thank you so much for this time. An excellent presentation by Professor Shivani Sharma. आपने बताया कि करुणता जब हमारे मनोमस्तिष्क में आती है तो वो प्रेम बन जाती है, और आपने वाल्मीकि के राम और वाल्मीकि रामायण का अद्भुत विश्लेषण करते हुए हमें अवगत कराया कि प्रकृति, जीवन और ईश्वर, इनकी सबकी समरसता से हम जीवन के सिद्धांतों एवं प्रेरक तत्वों को समझ सकेंगे अच्छे ढंग से। और आपने यह भी बताया कि समस्त नीतियों को, वे शासन की हों या अन्य की, इनके सिद्धांतों को और इनसे प्राप्त मार्गदर्शन को हमें सामाजिक विकास, वित्त, अनुशासन एवं अन्य क्षेत्रों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शिवानी शर्मा। Now we request, an humble request to Shri Shantanu Gupta from New Delhi to kindly speak on the Ramayana School taking Ramayana across the globe. आप रामायण स्कूल के बारे में बताएंगे, कृपया तालियों से स्वागत कीजिए। फ्री माइक दे देंगे तो जय सिया राम। मेरे ख्याल से सुबह से मंच से काफ़ी सारी अंग्रेजी बोली जा चुकी है, तो उसको एवरेज आउट करने के लिए मैं हिंदी में प्रयास करूंगा। नथिंग अगेंस्ट इंग्लिश, नथिंग अगेंस्ट द फेलो पैनलिस्ट। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और जैसा डॉक्टर अमृता जी ने कल कहा था, मैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आता हूं और उनका ऑफिशियल बायोग्राफर भी हूं, तो मुझे मेरा हिंदी बोलने की मेरी प्रतिबद्धता और बढ़ जाती है। जी, कल से डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे विद्वानों को बुलाया, बहुत सारे स्कॉलर्स को हमने कल सुना, आज सुनेंगे, कल भी सुनेंगे। डॉक्टर अमृता ने रामायण में अध्यात्म को खोजा। डॉक्टर नीलेश ओक बैठे हैं, वो रामायण में एस्ट्रोनॉमी खोजते हैं। कुछ लोग उसमें लिटरेचर रिव्यू करते हैं, कुछ उसमें कविता खोजते हैं, कुछ उसमें थिएटर, हमने कल देखा थिएटर खोजते हैं, और बहुत सारा बड़ा बड़ा एंगेजमेंट, बड़ी बड़ी एंगेजमेंट करते हैं। आई विल डिसपॉइंट यू, माई एंगेजमेंट विद रामायण इज़ वेरी वेरी स्मॉल। मेरी जो रामायण से एंगेजमेंट है बहुत छोटी है। मैं छोटे छोटे बच्चों को रामायण पढ़ाता हूँ, बस उतना ही करता हूँ मैं। हमारे प्रश्न रामायण से काफ़ी अलग होते हैं। कल डॉक्टर गुमास्ता जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो एक होटल में दूसरी कॉन्फ्रेंस भी चली रात को 9 बजे, जो रात के 2 बजे खत्म हुई। मैनी ऑफ अस एंड लेड बाय डॉक्टर नीलेश ओक में भी। सो उसमें प्रश्न तो अलग तरह के थे कि राम ने जो वाली का वध किया, क्या वो मॉरल था, क्या वो नैतिक था? जो सीता का अग्नि परीक्षा हुई, क्या वो नैतिक थी? डॉक्टर नीलेश लोग कहेंगे कि भाई रामायण की डेटिंग क्या है, वो 7000 साल है कि 14000 साल है। ये हमारे जो बड़े स्कॉलर्स हैं उनके प्रश्न होते हैं। बच्चों के प्रश्न अलग होते हैं रामायण से। मेरा बालक 9 साल का है, मैं उसको होम स्कूलिंग करता हूँ। जब वो 5 साल का था, उसने मुझसे अलग ही प्रश्न पूछे रामायण पे। शायद वो इनोसेंट प्रश्न थे, वो हम पे हंसी भी आ सकती है, क्या पता मेरे पास उत्तर, हमारे पास उत्तर भी ना हो। उसने मुझसे पूछा कि 14 साल भगवान जंगल में थे, उनके पास उनका हजाम नाई तो रहा नहीं होगा, तो उनकी दाढ़ी बढ़ गई क्या? क्योंकि जो चित्र दिखाए जाते हैं रामायण के, उसमें तो दाढ़ी नहीं होती है। तो अब वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा लिखा नहीं है कहीं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि वो कपड़े लेके चलते थे क्या, वो कपड़े धोते थे रोज अपने, या फिर उनका गठरी या कोई बैग तो दिखता नहीं है, उनके पास 2-3 कपड़े के पेयर थे या एक ही कपड़े का पेयर था?
मेरे पास उसका भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। मैंने कहा शायद रामायण कॉन्फ्रेंस में मिलेगा उत्तर। फिर उसने एक प्रश्न पूछा कि जब परशुराम जी वाला इंसिडेंट हुआ कि राम जी ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा और क्रोधित होकर परशुराम जी भी आ गए, तो उसने कहा कि दोनों विष्णु के अवतार हैं, मतलब एक को जाना चाहिए, आना चाहिए, दोनों एक साथ कैसे आ गए सीन में, मतलब एक ही स्क्रीन में दोनों कैसे हैं। तो दीज आर द एंगेजमेंट्स ऑफ द किड्स विद रामायण। सो वाइल होम स्कूलिंग माई सन, जब मैं अपने बालक को होम स्कूल कर रहा था, मुझे लगा कि उनके तरह से अगर मैं रामायण को कहूँ तो क्या कहूँगा। और देखिए कई बार बच्चा होने का अपना फ़ायदा है। मैं शायद शिवराज चौहान जी के बाद दूसरा व्यक्ति हूँ जो इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे एक अलग से रूम भी डॉक्टर गुमास्ता ने दे दिया है कि भाई तुम्हारी बातें दूसरे रूम में करो। तो बहुत सारे बच्चे जो आए हैं उनके साथ में 2 घंटे की क्लास अभी लूँगा, शाम को लूँगा और कल भी लूँगा। तो अगर आप लोगों के पास, किसके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, ऑल आर कैरिंग मोबाइल फ़ोन्स, कैन यू जस्ट ब्रिंग इट आउट। ऐसे भी बहुत सारे लोग आप मोबाइल ही देख रहे हैं, मैं देख रहा था स्टेज से, तो आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू टेक ए मोबाइल फ़ोन्स। अपना मोबाइल निकाल लेंगे सब, और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो कर सकते हैं आप। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक मिनट दीजिए मुझे। आप अपना ब्राउज़र खोलिए, जो भी आप क्रोम यूज़ करते हैं या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, उसमें ये वेबसाइट खोल लीजिए www.menti.com। इंटरनेट थोड़ा कम आ रहा है रूम में, लेकिन आ रहा है, मैंने कल ट्राई किया था। www.menti.com, और फिर वो कोड पूछेगा, उसमें एक कोड डाल दीजिएगा। होगा क्या, फिर हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। मैं यहाँ से सवाल पूछूंगा, आप उत्तर अपने अपने मोबाइल पे देंगे और मुझे पता लग जाएगा किसने क्या कहा। ये नहीं पता लगेगा किसने क्या कहा तो इसलिए मत डरिए, सब ने क्या कहा ये पता लग जाएगा। खोल पा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, मुझे दिख रहा है, यहाँ नंबर भी आने शुरू हो गए, देखिए वहाँ पे नीचे। आई थिंक कोरोना हैज टॉट अस, मेड ऑल ऑफ अस वेरी टेक्नोलॉजिकली सेवी। तो ऐसे इस टूल के माध्यम से और बहुत सारे टूल के माध्यम से पिछले 4-5 सालों में मैं करीब 8-10 हज़ार बच्चों के साथ 22 देशों में रामायण को ले गया हूँ। और उसका जो 2 घंटे की मैं क्लास लूँगा, उसका एक 10 मिनट का छोटा सा डेमो मैं आप सब के साथ चाहूँगा। और आप सब थोड़ी देर के लिए अगर मेरे साथ बच्चा बन जाएं, सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, इफ फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स इफ यू बिकम किड्स विद मी, दैट विल बी लवली। ठीक है, बहुत सुंदर। आप मुझे फ्री माइक दे सकते हैं? वाह, और इसको हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। कि आपने रामायण कहाँ से पढ़ी? आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं और वो छोटे छोटे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे कि आपने रामानंद सागर जी की टीवी सीरियल से रामायण पढ़ी, या आपने वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक पढ़े, या आपने तुलसी रामायण पढ़ी, या आपने कोई कॉमिक स्टोरी अमरचित कथा से पढ़ी, या आपने सुनी, माता पिता टीचर ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी, अपने गुरुओं से सुनी। तो आप जो भी एंटर करेंगे वो मेरे पास आता रहेगा। इस तरह से मैं बच्चों के साथ करता हूं जिससे वो इंटरेक्टिव रहे। ये जब भी मैं ग्राफ देखता हूं तो अमूमन ऐसे ही आता है, और इसमें देख के खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी इसलिए होती है कि 24,000 श्लोक किसी ने नहीं पढ़े, और दुख इसलिए होता है कि 24,000 श्लोक किसी ने नहीं पढ़े। और खुशी होती है चलिए पता सबको है, और रामानंद सागर जी की जो रामायण है और जो हमारी श्रुति परंपरा है सुन के कहानियां सुनने की, वो जीवित है। अब जब आपको रामायण आती ही है तो क्यों ना कुछ एक क्विज हो जाए। अब जैसे ही अगली स्क्रीन आएगी, वो स्क्रीन पे आपका नाम मांगेगा, तो आप अपना नाम लिखिएगा, तो जिससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि टॉप 10 लोग कौन है हमारी क्विज में। ये प्रश्न कुछ स्कॉलर्स के लिए बहुत आसान हो सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा सेटअप है ये बच्चों के लिए तैयार किया गया है। तो आप थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। ठीक, आप में से काफी लोग जुड़ गए हैं। आएगा देखिए आएगा। हु रोट ओरिजिनल रामायण? जो ओरिजिनल रामायण है, आप बात नहीं करेंगे, केवल मोबाइल से बात करेंगे।
ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वेदव्यास या ऋषि विश्वामित्र? आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसे कोई दो लोग हैं जो वेदव्यास जी भी कह रहे हैं। इसे हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ये 95% लोगों ने सही कहा है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, वॉज ऋषि वाल्मीकि कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड रामा? क्या वो एक साथ इस धरती पे थे, उन्होंने आपस में बातें करी, मिले जुले या नहीं? हाँ कि ना? अच्छा, ना वाले भी देखिए बहुत सारे लोग हैं। नहीं, वो साथ में थे, बल्कि कल किसी ने बताया था वाल्मीकि जी और राम जी में क्या संवाद हुआ। एक और क्वेश्चन, पांच प्रश्न है बस। वाल्मीकि रामायण इज रिटन इन विच लैंग्वेज? हमने फ्रेंच की रामायण भी देखी, प्रोफेसर बलराम ने अवधी की रामायण की बात करी, लेकिन जो ओरिजिनल रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, पाली में, अवधी में, हिंदी में? मोबाइल से बात करनी, मुझसे नहीं। बहुत सुंदर। तो ऐसे लोग हैं 14, 4 और 5% जो कहते हैं कि संस्कृत नहीं है। तो कई बार आसान प्रश्न भी आपको गूगली दे देते हैं। वाल्मीकि रामायण हैज अबाउट हाउ मेनी श्लोकास? मैंने थोड़ा हिंट दे दिया था स्टार्टिंग में। 108, 1008, 24,000, 5,000? मोबाइल से? मोबाइल से? आपको मोबाइल पे बताना है, आंसर लीक नहीं करना है। देखिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं, 30% पीपल आर स्टिल रॉन्ग। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, और बच्चों के साथ ऐसी मैं 2 घंटे की क्लास अभी लूंगा, तो अगर मैं यहाँ से कुछ पार्टिसिपेंट्स को चुरा सकता हूँ डॉक्टर गुमास्ता, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर दूँ। तो इसके बाद मेरा सेशन है दूसरे कमरे में। इन विच कांड ऑफ वाल्मीकि रामायण रामा सेंट टू एग्जाइल? किस कांड में उनको वनवास हुआ? बाल कांड में, अरण्य कांड में, अयोध्या कांड में या उत्तरकांड में? देखिए 50% लोग अभी भी गलत है। तो इस तरह से हम क्विज करते हैं, और यहां पे हम रिजल्ट भी देख सकते हैं। देखिए क्या बात है, देखिए इतने सारे गुरु हमारे सामने बैठे हैं और एक गुरु ही नंबर सबसे पहले आई है। बहुत सुंदर। अब फिर हम पूरी रामायण समझाते हैं अपने रामायण के क्लास में, और मैं एक पूरी रामायण को हमने 25 भागों में बांट लिया है। आई हैव ब्रोकन रामायण इनटू 25 small conversations and we try to derive a lesson out of each conversation. हम एक जो बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स में, उसमें से एक लेसन लेना चाहते हैं। तो उस 25 लेसन में से एक लेसन मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूंगा। ये सीन देख के आपको पता लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। कैकेयी अपने वर मान चुकी हैं, दशरथ सोच रहे हैं कि मैं वो जो उन्होंने मांगे हैं उनको मानूं या ना मानूं। अगर मान लेता हूं तो मेरा प्रिय पुत्र चला जाएगा, अयोध्या से इतना बड़ा राजा छिन जाएगा, और नहीं मानता हूं तो माना जाएगा कि दशरथ जैसे राजा ने वचन तोड़ दिया। अब आप इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं मानता हूं कि ये सब लोग मॉडर्न दशरथ हैं, आज के दशरथ हैं। अगर आप होते इस सिचुएशन में तो प्रैक्टिकली क्या करते? अच्छा आंसर, गुड़ी आंसर मत दीजिए, बताइए कि अगर प्रैक्टिकल आंसर क्या देते। इमेजिन यू आर किंग राम, और आपको पता है कि आप और केके के बीच में जो प्रॉमिस है वो किसी को पता भी नहीं है। देयर इज नो टेस्टिमनी टू इट। जैसे हम वो कॉन्ट्रैक्ट कीजिए टेस्टिमनी करते हैं ना, कोई टेस्टिमनी नहीं है। अगर आपने धोखा दे भी दिया केके को तो कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई आपको तंग नहीं करेगा। या आप कह सकते हैं केके मांग लीजिए, लेकिन कुछ और मांग लीजिए, ये तो जो आप मांग रही है बहुत नाजायज है ये तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग या तो कह देंगे नहीं इतना अच्छा राजा चला जाएगा, मैं नहीं मांगूंगा माने, या मैं अपना बेटे को खो दूंगा, या आप मांग लीजिए, कुछ और मांग लीजिए। मैं एक चुने हुए राजा को, जो इसकी पूरी सभा ने जिस राजा को चुना है, उसको मैं ऐसे जंगल नहीं भेज सकता बिना किसी बात के। हाँ, देखिए मुझे नहीं पता लगेगा कि आपने क्या आंसर दिया है, तो आप बिल्कुल दिल खोल के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा होने की चाहत में आप कुछ एक पॉजिटिव आंसर इसलिए दें कि आप अच्छे लगेंगे। तो अभी 50-50 है हाउस। 50 लोग तो कह रहे हैं कि मैं मान लूंगा, और 50% 49-51। तो आज के दर्शक इस तरह के हैं डॉक्टर साहब। लेकिन उस समय के दर्शक ने जैसा डॉक्टर बलराम ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सो आई विल फॉलो द प्रॉमिस वॉट एवर मे हैपन, एंड आई फॉलो अ प्रॉमिस ओवर माई डेथ बेड। एंड दशरथ उस वियोग में सच में मर गए। कुछ समय बाद उनका खाना पीना, श्वासें रुक गई,
और वो उस दुनिया से चले गए। तो इस तरह से अब ये लीडरशिप लेसन नंबर 5 है। ऐसे 25 लेसन को हम 5 घंटे के 5 दिन के कोर्स में कवर करते हैं। आज कुछ लेसन्स को हम 2 घंटे में कवर करेंगे। फिर हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि गूगल डिस्टेंसेस कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे रिलेट कर सके कि मैप क्या है। रामायण की एक ज्योग्राफी भी है जो अयोध्या से शुरू होती है और श्रीलंका में खत्म होती है। स्टार्ट्स एट अयोध्या एंड एंड्स एट श्रीलंका, एंड वी हैव पीपल फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज हेयर। सो अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे, फाइंड द गूगल मैप में आप अयोध्या और धनुषकोडी के बीच का डिस्टेंस नापने की कोशिश करें। गूगल मैप निकालें, उसमें स्टार्टिंग में लिखें अयोध्या उत्तर प्रदेश और डेस्टिनेशन में लिखें धनुषकोटी तमिलनाडु। देखिए कितना डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस देखिएगा। बाकी फिर आप देखिएगा चलने में समय कार से अलग लगेगा, ट्रेन से अलग लगेगा, पैदल चलने में अलग लगेगा। क्योंकि समय कम है, मैं आपको आंसर बता देता हूं, 2400 किलोमीटर है। इससे बच्चों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो डिस्टेंसेस रियल हैं क्या, वहाँ से कितने दिनों चले, कितने दिन कैसे लगे उनको। चलिए अब खत्म की तरफ बढ़ते हैं। रामायण का कौन सा कैरेक्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है? आपको लिखना पड़ेगा अपने मोबाइल में, वो आपको ऑप्शन देगा, और जो लिखेगा यहाँ पे एक तरह की पोलिंग हो जाएगी। आज हमने रामायण के कैरेक्टर्स के बीच में पोलिंग करा दी। जो द वर्ड विच इज रिटन मल्टीपल टाइम्स इन द सेम स्पेलिंग will look bigger. So if Rama is look bigger, mean the same spelling is written by many participants. Okay, so there is a competition emerging between Rama, Bharat and Hanuman, it seems. Okay. Okay. And then I asked my children to articulate like why Rama, why Hanuman, and I have amazing videos. You can go to Ramayana School's YouTube channel and you'll find amazing videos of children articulating. बच्चों ने क्या कहा कि उनको राम क्यों पसंद है। किसी ने रावण भी लिखा है, वो भी अच्छी बात है। Maybe to please our Sri Lankan guest. Okay. तो एक नहीं, ये एक चीज और करते हैं। देखिए मुझे लगता है डॉक्टर साहब, हम सब में राम है, हम सब में रावण है, और मेरे ख्याल से हमारा यही जीवन में प्रयास है कि हमारे जो राम गुण है, रामा क्वालिटीज है, उनको कैसे बढ़ा सकें और रावण जो गुण है उनको कैसे कम कर सके। तो आज एक मौका मैं आपको देता हूं, और पता भी नहीं लगेगा कि कौन सी रावणा क्वालिटी है आपके अंदर जिसको आप इस मंच में आज वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में मार के जाना चाहते हैं। विच रावणा क्वालिटी विद इन यू वांट टू किल टुडे। मुझे पता भी नहीं लगेगा किसने क्या लिखा है, लेकिन हाँ काफी ईगोइस्ट लोग बुलाए आपने डॉक्टर साहब। I think these are the brave people who have written. I think we all have the same problem, only few are ready to agree. तो इस तरह से कुछ सेशन चलता है, और इसमें से साउंड भी आ जाएगी ना भैया? हाँ, तो मैं आपको एक 2 मिनट का वीडियो सुनाना चाहूँगा कि जब ये प्रश्न मैंने बच्चों से पूछा, और 22 देशों से बच्चे अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मेरे साथ रहे हैं पिछले 5-6 साल में। करीब 10,000 बच्चों के साथ हमने ये वर्कशॉप्स करी हैं। तो सुनिए कि जब हमने ये एक्सरसाइज करी, लेट्स किल द रावणा विद इन देम, तो बच्चों ने क्या How many of you want to kill your Ravana today? My Ravan I want to kill is laziness. I want to kill the procrastination. I want to be focus on one thing instead of many things in one time. The Ravana that I want to kill is the COVID because I don't get to go to school and I really like school. I want to stop using too much technology because for school we use technology and when we want a break we use technology also. The Ravana I want to kill is negative thoughts. I want to kill the time of all my electronics. Do multiple things at once because then I focus on too many things and then I mess up, so one thing at a time. I want to kill all the bad habits in me. I want to kill the laziness inside me. So I want to kill my bossiness. I want to kill this Ravana that I have to pray regularly to Lord. In fact, in this lockdown also I decided that I read Hanuman Chalisa 2 times in a day. I'm not doing my homework. That Ravana of overthinking everything. So yeah, this is the way I think we were able to reach to lot of kids across the globe, and
and we try to use technology like the small demo that we did, and try to create different kind of puzzles, different kind of jigsaw puzzles, crosswords. I'm sure you all solve crosswords, right? So if you go to our websites, you can solve maybe a crossword on Balakanda. And you can just go to website and maybe solve a crossword on Balakanda. So I think this is my humble effort, my team's humble effort in last 4 years, that we were able to take the lessons of Ramayana and lot of learnings that I've earned through a lot of scholars from various parts of India and various parts of the globe. I try to take that to children across the globe. Yeah, thank you. That's all. Very nice presentation and very interactive session display. Web-based, modern, enriching thoughts. Shri Shantanu Gupta. Thank you very much. Now, the session ends here, and I would like Dr. Pawan Sthapak to please felicitate the speakers. Come on the dais and please felicitate the speakers. Pawan Sthapak received an award from Shri Aditnath ji, UP Chief Minister, for having continuous Akhand Ramayana in his institute from 1967 onwards, from 16th August 1967. So, this first session ends here. Second session, please. Very important session. Indo-Sri Lanka Ramayana Circuit. May I request Bala V. Rao to please accompany Honorable Shri Vidur Vikram Naike, Minister of Culture, Government of Sri Lanka. So there is some change. First, there will be a presentation by Mr. Bala V. Rao, Sankuratri. I'll request Bala V. Rao to take Honorable Shri Vidura Vikram Naike ji on the stage. And also I'll request Shri Vinod Gotia ji to chair the function, who is Cabinet Minister in State Government as Chairman of MP Tourism. Bala V. Rao will be presenting on Dive into Ramayana. There is a misprint in the itinerary. There is Dive into Ramayana. And then on prospects and future of the Ramayana circuit, Honorable Shri Vidura Vikram Naike ji will be speaking. From Sangh Karyalaya, there are some people, Mr. Soni and accompanying person for Kalash Pujan. Yes, Vidura, please. Dr. Pawan. Thank you for the Honorable Vidura sir and Honorable Vinod sir for joining us.
And I'll just take a short presentation and then we'll go with a discussion session going forward. So today, my topic is dive into Ramayana. I don't know, when the typing happened, when the composing happened, the dive into Ramayana was misprinted as divine into Ramayana. Just Bala, 2 minutes, I have one announcement. The students who have come for the Ramayana school may go to the hall 2, please. Yes, so it was mistyped as divine into Ramayana. So that could be the cause of divine, or when the composer is composing it, it could be the cause of the wine. It could be any of it, right? Myself, Bala Sankuratri, and firstly, let me thank World Ramayana Conference for giving me this opportunity. The team, can you on this display also so that the dignitaries can also see the presentation? Can you on this display also so the dignitaries can also? Yeah. Okay. Well, what is dive into Ramayana? What is that we want to say? There are basically two things what I want to present today. One is the author's perspective. What is that this author is thinking in his mind when he's writing or jotting down the text of Ramayana? So right from Valmiki till our Gumastaji, we have written Ramayanas. So at every generation, there is no generation which has not written Ramayana. So every generations have written Ramayana, starting from Maharshi Valmiki. So my point here is not to talk about Rama, not to talk about Ravana, not to talk about all these people, but what is that which is running in the author's mind when he's writing this? What is that he want to achieve when he's writing this text is what we're going to talk about. So by understanding the author's mindset, trying to understand the author's mindset, we'll try to discover something what he want to say, and we'll try to unlock few things. I'll take one example. Instead of taking all the authors, I'll be a little restricted to my topic, Maharshi Valmiki is writing. So let us start with the first point about the writing stuff of Maharshi Valmiki. When he's writing, what is that it is running in his mind? What is that it made him to write this stuff? This is the first sloka in the first kanda, in the first sarga of Maharshi Valmiki's writing. He speaks to Narada asking multiple questions, and what he asks is there any person living today? Is there any person living today? Which means he's referring to a human who is living today, of said qualities of he's having power, he's having righteousness, gratitude, so many qualities. Especially he's asking a living creature who is living today and of having so many qualities. Basically, he's referring to Adarsha Purush. Is there anybody in this world of such great qualities? Multiple slokas come in that case. If there is someone like that, please tell me, is what he's asking. Now, why is he asking that? As an author, there are many authors here. So if we encounter a person and then we like him, we travel with him, we admire him, and then we start writing on him, it's a different story. But Valmiki, even before traveling with Ram, he decided to write something. He wanted to say something to this world. And for him to say that something to this world, he need a character with all Adarsha qualities. So he's searching for an Adarsha Purusha to tell something what he wanted to tell. So what is that something else other than the Ramayana he wanted to tell, communicate through his literature, is what we're going to discuss. So on the account, while telling the qualities of, while telling the story of an Adarsha Purusha, Valmiki is trying to tell something else. Let us dig into that. So he took Rama as the main pillar of the story, and along with the story of Rama, he weaved many other things. He added many other things into the Valmiki Ramayana. He spoke about the geography. He spoke about the geography of the world. He spoke about
the politics of those days. He spoke about the history of those days, history of Rama's history. He spoke about the history of those days. He spoke about the social conditions of those days. He spoke about the women rights, women freedom. He talked so many, how they play theaters, all this stuff he spoke. He spoke about the flora and fauna in his text. He spoke about sciences of those days. He spoke about economics. He spoke about the tax systems in those days. If he's just telling the Ram story, he need not talk all these. You can see the series of what Nilesh Okji has done on Sugriva's Atlas. When he's telling the direction, when Sugriva is sending Vanaras on different directions, he comes out of the main story. He goes for 4 sargas, only describing the geography of the land, and comes back. And when Vishwamitra is talking about astras, he comes out from the main topic and he goes explaining for about 2-3 sargas what are the astras, and then comes back. So he's involving many things along with the Ram story. What do you want to do? What do you want to tell in the Valmiki Ramayana? Basically, he is giving the encyclopedia of those days to that generation. He is revolutionizing the education system by telling the Ram story. If someone reads the Ram story of those days, which means they are finishing the entire primary education of those days. He's giving everything in that. Along with everything what encyclopedia has to give, he's also adding additional stuff of morals to the society. So, which is a little beyond the encyclopedia, and there comes Itihasa. What is Itihasa? Do we have any definition for Itihasa somewhere written either during the time of Ramayana or even after the time of Ramayana? Is there any definition to Itihasa mentioned somewhere in the scriptures? Yes. It is Dharmartha Kama Mokshanam Upadeshita Samanvitam Purva Vruktam Katayuktam Itihasam Prachakshate. It means he's talking about the things that happened, which means history and what all happened actually. And he's telling in the story format, embedding the morals with an intention of teaching. So there is an historicity element, there is a story element, there are the moral elements, and the intention is very clear to teach to the society. And the reference is from Brihid Bhagavata Mitra, and the sloka numbers are given there. When I'm giving anywhere the sloka numbers, please read a little before and after also, because from one print to another print, the sloka numbers may differ sometime. Just a disclosure, because... Right. So let us see next. Because I'm talking about Indo-Sri Lanka, I just took this character, Ravana, as an example. You may take many other characters in the Ramayana. So I'll tell you. So, is Ravana discussed in the Vaishnavite faith? Yes, he's been discussed, right? Is he being discussed in Shaivite faith? Yes. Is he being discussed overall in the Hindu culture, Hindu religion, Hindu faith? Yes. Did this character been discussed in Buddhism? Yes. Is he not discussed in Jainism? Yes. Is he not discussed in Sikhism? Yes. When all these religions spoke about the characters written in the Valmiki Ramayana, how can you attribute the whole Ramayana to one faith or practice? It is beyond the religious borders. It has nothing much to do with the religion. It is something to do with something else. What is that? If you observe, everything, if you see all these religions which are born, the faiths which are born, are likely to be born in this region of the world. Which means it has something to do with the geography of this region. It has something to do with the history of this region, which simply means it has something to do with the culture of this land and not with anything else. There we go, that Ramayana is the cultural subject beyond the religious subject or the faith subject. And what do you mean by a cultural subject?
anything which travels from one generation to another generation is the cultural subject. If my grandparents are giving to my great-grandparents, giving to grandparents, grandparents giving to my parents, they give it to me and I give it to my next generation, that is a cultural text, cultural subject. Ramayana is a cultural subject. And if it is only within one family, it is the family's culture. But if it is among the societies across, which means it is the cultural subject of the entire society. Ramayana is the cultural subject of the entire society. Now, any subject gets into culture from various other streams. Into culture is a bigger subject. A subject can get into culture from history. A culture can get into subject from ethnicity. A subject can get into culture from religion. A subject can get into culture from your skills, your labor work, your skills, etc. Subject can get into culture just from the moral stories, even from the fairy tales, etc. So from where did Ramayana get into culture? From where? We are talking about, of course, from Itihasa, it has gone into culture. So when we're saying that it has gone from Itihasa line into culture, we need to justify that statement. I'll try to justify that statement, but before that, I'll give you an example of some other subject which has gone into culture from some other line apart from the historicity. Okay? I'll just give you an example. I hope you all have seen this story, this particular story. Everybody knows it, right? The rabbit and the tortoise. For some, I don't know in which language they spoke, and then finally they did the race, and one other lost, and there is a moral story there. Now, how can a rabbit and a tortoise talk, first of all? So it's all nonsense. So let us remove this story from the culture. Is it possible? So culture has various subjects. It has the moral subject also. In terms of the moral subject, sometimes the fairy tales also get into. So Itihasa is something which teaches these morals along with the historicity. Along with the historicity. And giving the moral, the dharma, the karma, the morals and principles of the life. That's how is Ramayana. Now let's go back to Ramayana. So you take any Ramayana, any version, most of them take the main route, Itihasa, and there is an element of historicity involved. So with that, we'll get to the second topic. What are we going to discover and what are you going to unlock from understanding the author's point of view and from the definition of Itihasa? So the topic what I'll be taking up is the linguistics and language connection. Linguistics and language connection. And I also take another subject, this region of the globe. Okay? The minute you saw this, you may be thinking I'm talking about Ramasetu. I'm not talking about Ramasetu. I'm talking about the entire region of that area. So that where it comes, I'm not diving into the sea there, but in that perspective, I'm diving into Ramayana. I'm not diving into the sea, but I'm diving into Ramayana, which refers to these elements. So let us try to explore this region there once. Okay? Now, if you think in the oceanography levels, etc., if the water level is going down as we go into the past, which simply means that region should not have any water, which means India and Sri Lanka, in many years back, it should be a land connectivity. If it is a land connectivity like this, which means there is no need of building a bridge at all, which also means that Sri Lanka is not Ravana Lanka. Right? Now let us go a little more deeper. So you go way back to the times of dinosaurs also, when the tectonic plates moving, India and Sri Lanka are always together and they're moving always together, which means even before the times of Himalayas being formed. Okay? And there is no water body between India and Sri Lanka in those millions of years back. So how did the water come between India and Sri Lanka? We need to find out. And do we have any references in Ramayana? Let us think. Let us think, is there any reference
of water coming there where the water is not supposed to be. Is there any reference in Valmiki Ramayana? Let us see. The first reference comes in Balakanda, the first part of Valmiki Ramayana. And the situation is Maharshi Vishwamitra, the guru of Sri Ram and Lakshman, during their residential schooling with Vishwamitra. And Vishwamitra will be telling the history of these kids, history of their dynasty to these kids. And then he will be referring to King Sagar and his sons digging up the planet in different parts of the world. So he keeps digging up the land in different parts of the world, so including the Dakshin region and many other parts of the world. So why are they digging is not the question, but they have dug it. That is the main point. So in most of the places, when they have dug, it's only about the land digging. There is no reference to the water. But there is one place where they have dug, and there is also a reference to the water. And that leads to the next reference of that region. That comes in Sundarakanda, the 5th part in Valmiki. And the sloka numbers, you can find it in the left. The situation is the sea god thinking for himself to help Hanuma, who is crossing the sea. So sea god is thinking for himself that he need to help this Hanuma, who is crossing the sea. So now the authors, the Itihasa point, the story element is how can a sea be a human and start thinking like the human being? That is the story element. But by telling that story element, Valmiki Maharshi is trying to give you the geography of that land. That is what we need to understand. So what is he telling? Again, he is referring to the same area that the sea, now the sea is telling. Sea is telling that it is being expanded or extended in that region, expanded or extended in that region, the place where Sagar has dug. Because the Sagars and Sagar's sons have dug, I got expanded myself, is what sea is saying. So the sea got extended because of the digging what they have done. The digging is done and the water is coming in. So where we get the next reference, the third reference. The third reference will come again in Sundarakanda itself. And that is when Mainaka, the flying mountain, communicates with Hanuma and talks about again the same region. Now how these mountains fly is again the Katha part. But what is that he want to tell about the geography is this Mainaka, the flying mountain, talks with Hanuma and tells, brother, you can take rest on me, okay, because you are going on the Ishwaku's family's duty, and the sea god instructed me to help you. And sea god is instructed me to help you because you are going on the Ishwaku family's duty. Because of that family, the sea god is actually here. He got extended here because of that. So this is the next reference. So there are series of stuff which are leading that it was land before, accepted by the Ramayana itself, and then the water got into. The next reference comes in Yuddha Kanda. When I'm making this presentation for this particular slide, I don't have the Devanagari, the Hindi version of the book, so I just picked it from my mother tongue, Telugu. Where Nala is having a conversation with Rama and telling about sea god. So here he says, this sea god has no gratitude. The very existence of him in this region is because of your family. So he should not have made you wait for so many days, or 3 days, and then when you are angry, he started giving you the solution. So he should have not done that. This guy doesn't have gratitude. So he might have done this, so he might have given the solution in the day one itself. But if you see in the earlier situations in Sundarakanda, the same sea god was trying to help Ram. So here is again the Katha Yuktam part, bringing that thing, the 3 days of tapas what Rama has done, actually says the 3 days of survey of that entire region to identify the best place to build the bridge. That is what the tapasya means. That is what Valmiki is trying to tell you. So this is the survey of the region. Well, I've given so many examples, right from Balakanda to Yuddhakanda, this reference has continuously coming. If it is just a story, the reference might have gone at only one place. And in the first, in Balakanda, only about the digging of the land,
Valmiki spends around 2.5 chapters. Well, apart from Valmiki Ramayana, is there any other text talking about this? Is there any other text talking about this? Yes. We have the references from Srimad Bhagavatam. In Srimad Bhagavatam, again the same reference comes that Maharaja Saga, when he's digging up the oceans, there are 8 adjoining islands formed. The very important word is digging up the land and the islands were formed, which means the water has entered in between. Point number 1. And it doesn't talk about one island, it talks about 8 islands. In simple words, multiple islands. And there's one more quality, that they are adjoining to each other. That is very important. They are adjoining to, they are very close by. Point number 1. And if you see the names of those islands, the last 2 names refer to Sinhala and Lanka. It refers to Sinhala and Lanka. Okay? Now, Sinhala is the major spoken language in Lanka, Sri Lanka. But here, Sinhala is given different name as a separate island, and Lanka is given as a separate island. But we know Sri Lanka as a single island. Where did the other islands go? Is Sri Lanka the Lanka or the Sinhala? Which island is this? Where are the other islands gone? Now let us see the Sri Lankan map. The word adjoining is very important. Because the islands are very close by, it is a natural tendency even today, we assume Sri Lanka to be one single island. But in reality, they are a group of islands. Even today, they are a group of islands. If you little zoom, if you can just see that part, let me see if I can show you. See, this the whole big island, if you see here, the Jaffna itself is an island. There is a water even here. If you furthermore zoom, there is a water path even here. This entire big piece, big chunk itself is an island. And the multiple islands here. So, he is referring to the same place. So, apart from Bhagavatam, okay, enough. Let me squeeze it a little more. Do we have furthermore references on this? We have. There is a book in Telugu, very old book called Purva Gada Lahari. The text, this book is basically like a dictionary. So like how we have in dictionary, we have, we search for the word and their meanings. But this book has the words, only the words which are in the epics of Indian subcontinent. So all the names written in the epics of Indian subcontinents are jotted down in this book, and where are they referred, what is the meaning, is what this Purva Gada Lahari has. Now let us see what this Purva Gada Lahari to tell. When I searched for the word Lanka, what is the meaning of Lanka in Purva Gada Lahari, it says, this one in Telugu, but I'll just try to translate it for you in English. It says it is an island which is formed along with the other group of islands during the process of Sagar digging the Jambu Dvipa. So he refers to Lanka and Sinhala once again. So when I searched for what is the meaning of Sinhala in this particular book, it says it is an island which is formed by the digging of Jambu Dvipa by the Sagar and his sons, is what is been mentioned there. Please sum up. Yep. So that we have come to the. So what is the conclusion of the whole subject? What is the conclusion of the subject? Number one, Ramayana has historicity. It is referring to the historical elements which happened. And Ramayana very much satisfies the definition of Itihasa, point number 2. And then Sri Lanka is Ravana Lanka, undoubtedly. And then Sinhala, the major spoken language. This is one point what we need to understand. So we have a lot of astrodating happening. We have one expert of astrodating here. So either you take Mahabharata time,
There are few people who say it's around 3000 BCE, but we have the expert here, Nileshok ji, saying it is around 5000 BCE, 5500 BCE. You take Ramayana, is it 7000 BCE, or the Nileshok ji's version 12200 BCE. In either of the cases, when the word Sinhala has come in Bhagavatam, which was written by Vyasa Maharshi at the time of Mahabharata was written, which simply means the Sinhala existence is definitely there during the time of Vyasa's writing. And he is referring to Ramayana. So if you consider Mahabharata happened 3000 BCE, adding the current times of 2023, which means minimum of 5000 years old is Sinhala. And if you go to the 5500 argument, which means it is minimum 7500 years old. And if you go to the Ramayana argument and reference, which may lead us to up to 14,000 years old language is Sinhala. That is, Sinhala is minimum 5,000 years old, and it can be tracked to up to 14,000 years old also, which means we are able to identify the age of a particular language scientifically only and only when you start reading Ramayana and these epics. With this, I will conclude the presentation. And now we'll go to one more session. Last year means 2020, when I did the World Ramayana, when I attended the World Ramayana conference, when I gave my presentation, at the end of the presentation, I asked one question to all the audience. So, see, we are coming here, we are doing presentations, and again, after a couple of years, again, we do some presentations. What is the plan of action, what we are doing, is what I asked you in 2020, and I would love to repeat the statement again. Where is the plan of action? So when I came in 2020, I told I will take the responsibility on the stage. I told I will take the responsibility in building the cultural relations between India and Sri Lanka. And as I promised, today I brought the Honorable Minister all the way from Sri Lanka. Okay, now Honorable Minister is here. Now let me know whether the World Ramayana Conference and others, how are we going to get into the administration, get into action. And sir, today we want you to give your comments on that. How can we cooperate, both the countries, both the states, both the territories, how can we cooperate and get the things into action? And we'll just pass on the call to Honorable Vinod ji to give his comments on that. बोलिए राघवेंद्र सरकार की। थोड़ा शांति हो गई है, ठंड का समय है, ज्ञान रंजन तो बहुत हो रहा है। एक बार जरा जोर से बोलेंगे, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इस तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के अवसर पर आज के सत्र में मंच पर विराजमान श्रीलंका से हमारे बीच में आए हुए ऑनरेबल कल्चरल मिनिस्टर श्री विदुरा जी, और जिनका प्रेजेंटेशन अभी हम देख रहे थे, श्री बालाजी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव। जब राम शब्द सुनते हैं तो हमारे जीवन की पूरी यात्रा का स्मरण हमको होता है। अनादिकाल से, जहां मैं अनादि शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वहां यहाँ जो हमारे स्कॉलर्स बैठे हैं
उनने उसको कालखंड में विभाजित किया है। कोई 7,000 साल की बात करता है, कोई 14,000 साल की बात करता है, पर अनादिकाल से ये हमारे जीवन का हिस्सा रहा है कि जब हम पैदा होते हैं तो जो मंगल गीत गाए जाते हैं उनमें राम का स्मरण होता है, और जब हमारी अंतिम यात्रा होती है तो वो राम नाम सत्य के साथ पूरी होती है। ये हमारे जीवन का सार है। और जब राम वनगमन पथ की बात आती है या राम की उपस्थिति की बात आती है, तो मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हमारा आजादी के बाद जो संविधान लिखा गया, कल यहां बताने वाले लोग कह रहे थे कि उसके प्रथम पृष्ठ पे जो हस्ताक्षर उसके चित्रकार ने किए उसने राम लिखा उस पर, व्यवहार साहब ने, और इसलिए प्रथम पृष्ठ पर राम है, भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम है। हमारी संस्कृति में भी राम है, हमारे संविधान में भी राम है, हमारी बातों में भी राम है, हमारे जनमन में भी राम है। पर कहीं ना कहीं ये सत्य है, इसको हमको स्वीकारने में कोई दुविधा नहीं है कि हमारे चरित्र में राम की कमी हो गई है। और इसलिए विशेष रूप से उन लोगों को जिनको इस देश को दिशा देने का काम करना था, ये तो हमारी पहले दिन से ड्यूटी थी कि भगवान राम किस पथ से वन में गए हैं, कौन सा मार्ग उनने अपनाया है और क्या उसका हमारे जीवन में आध्यात्मिक महत्व है। अयोध्या का एक राजकुमार जब जंगल की तरफ जाता है तो तमसा को पार करने के बाद उसके जीवन की जो यात्रा शुरू होती है, लंका तक की जो यात्रा शुरू होती है, वो श्रृंगवेरपुर की होगी, वो पंचवटी की होगी, वो दंडकारण्य की होगी, वो नासिक की होगी, वो पंपा भी गए होंगे, वो हम्पी भी गए होंगे, आज के युग में वो रामेश्वरम भी गए होंगे, धनुष होते हुए श्रीलंका के उन पर्वत श्रृंखलाओं में भी गए होंगे जहां रावण का महल था। लेकिन जब वो राजकुमार वनवासी होके और वहां से वापस लौटता है तो वो ईश्वर के रूप में स्थापित होकर वापस आता है। एक राजकुमार की यात्रा ईश्वर के रूप में स्थापित होकर जो वो वनगमन का पथ है, और मैं इसको ऐसे कह सकता हूं सहजता में कि अगर आप सब कुछ त्याग के निर्मोही होके और एक पथ पर चल पड़े जिसमें आपके सामने दंडकारण्य जैसे भीषण संकट भी आए, पर आपकी प्रतिज्ञा स्थिर प्रज्ञ बनी रहे, तो आप जब उसके पार जाएंगे तो आपके अंदर आध्यात्म की इतनी ताकत होगी, आप इतने आध्यात्म से सामने हुए थे। अब जहां तक भारत और लंका के संदर्भ में इन बातों को देखने का सवाल है कि कैसे इन चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो भारत की सरकार ने 2019 में और कोई एक 10-12 स्थानों को जो चिन्हित स्थान हैं, वो राम से जुड़े हुए स्थानों को, उन डेस्टिनेशंस को चिन्हित किया है और राम वनगमन पथ में उनको शामिल किया है। और वो मोटे मोटे जो स्थान है जिन पर कोई विवाद नहीं है, उन स्थानों के बारे में सरकार ने नोटिफाई किया है। कल मुझे यहाँ गौतम जी बता रहे थे, गौतम जी यहाँ बैठे हैं, उनने मेरा परिचय किन्हीं एक महानुभाव से कराया था, मैं उनका नाम भूल गया, पर उनने बहुत बारीकी के साथ वनगमन पथ के ऊपर काम किया है, उसके किलोमीटर्स के ऊपर, उसकी टाइमिंग्स के ऊपर बहुत कुछ किया और बहुत विद्वानों ने किया है। पूरी दुनिया इस मामले में रिसर्च कर रही है, पर वो बारीकियों में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जो मोटे मोटे स्थान हैं वो आज बहुत स्थापित टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। अब हो सकता है कि भगवान राम जब 12 वर्ष तक कहते हैं कि चित्रकूट में रहे हैं, तो 12 वर्ष का कालखंड उनका चित्रकूट में कहाँ गुजरा, अत्रि ऋषि का आश्रम कहाँ होगा, अनुसुईया जी कहाँ थीं, ये बारीक विषय हैं जो स्कॉलर्स इसकी तरफ ध्यान देंगे। लेकिन संपूर्ण चित्रकूट की माटी हिंदुस्तान की उस धर्म प्रेमी जनता के लिए, आध्यात्म को जीने वाली जनता के लिए, उस कल्चर को जीने वाली जनता, जो पूरे देश का एक कल्चर है, जिसकी अभी इस सत्र के पहले बात चल रही थी
कि लोहड़ी से लेके और पोंगल तक का जो समय होता है पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि हम एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा में विश्वास करते हैं। हमारे 100, 1000, 500 राजे रजवाड़े रहे होंगे अलग अलग टाइम में, पर हमारा जो कल्चर था वो एक था। और इसलिए हमारी अवधारणा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है। जो लोग कहते हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा, उनको हम बताते हैं कि भारत एक राष्ट्र कैसे रहा है। और इसलिए जब हम पर्यटन के संदर्भ में और विशेष रूप से लंका के साथ पर्यटन के संदर्भ में बात करते हैं, तो वो जो कल्चर है जिसकी कल सुधांशु जी बात कर रहे थे कि ड्युअलिटी का सवाल नहीं है, द्वैत का सवाल नहीं है, ना तो बौद्धिज्म में और ना सनातन में। क्योंकि वो जो भरत खंडे वाला श्लोक जो वो सुना रहे थे, उसमें उनने बुद्ध की भी अवधारणा को कहा है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो भी उस श्लोक के अंतर्गत आते हैं। और इसलिए द्वैतवाद का कहीं कोई प्रश्न नहीं है उस पूरी अवधारणा में। वो रावण को भी राम से जोड़ते थे कि आखिर अंत में रावण भी राम में समाहित हुआ, उसकी चेतना भी राम में समाहित हुई। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये द्वैतवाद का प्रश्न नहीं है। तो जब हम लंका के संदर्भ में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार ने जो स्थान तय किए हैं वो अपने स्थान पर हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट के कल्चर मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी, श्रीलंका की सरकार ने भी कुछ चीज़ों को अभी अभी आइडेंटिफाई करके और उनको धार्मिक पर्यटन के साथ जोड़ने का प्रयत्न शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि बौद्धिज्म को लेके विशेष रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है सांची में। सांची जो है वो अशोक से जुड़ी हुई रही है। उनकी पत्नी जो विदिशा थी वो हमारे विदिशा से थी और उन्हीं के नाम पर विदिशा शहर है। और इसलिए वहाँ जो सांची का स्तूप है उसका अपना पूरी दुनिया में एक महत्व है और बौद्धिज्म का एक बड़ा केंद्र है। और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने श्रीलंकन सरकार के साथ उस यूनिवर्सिटी की शुरुआत यहाँ की है। वो निर्माणाधीन है और विशेष रूप से उन लोगों को इस दिशा में उसका लाभ होगा जो स्कॉलर्स अध्ययन करना चाहते हैं, उच्च अध्ययन के लिए यहाँ आना चाहते हैं। पर मैं ऐसे समझता हूँ इसको अन्यथा संदर्भ में ना लिया जाए। कभी रावण को विभीषण ने सलाह दी थी कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। वो उस समय की बात रही होगी जब विभीषण अपने बड़े भाई को समझा रहा था। लेकिन आज इकोनॉमी का जमाना है और मैं समझता हूं कि जिस दौर से श्रीलंका आज गुजर रहा है, हमने वो चित्र देखे श्रीलंकन इकोनॉमी के। अगर श्रीलंका भगवान राम से जुड़े हुए तीर्थ स्थलों को हाईलाइट करता है, उनको फैसिलिटेट करता है और वहां जाने की सुविधा भारतीय जो सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं उनको मिलती है, तो श्रीलंका की इकोनॉमी में इतना बड़ा बूस्ट आएगा कि मैं कह सकता हूं कि लंका अचल राज तुम करहु, राम चरण पंकज धरु। अगर भगवान राम को केंद्र में रख के लंका के लोग उस दिशा में बढ़ते हैं तो लंका की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी और यहाँ बैठे हमारे मित्र जो हैं वो जीवन पर्यंत एक अच्छे शासक के रूप में वहाँ स्थापित हो सकते हैं। भारत की सरकार इस विषय को आज गंभीरता से ले रही है और इसलिए हमने जो राम का जीवन के जिन चिन्हों को जोड़ा है उसमें हमने नेपाल को भी जोड़ा है और इसलिए जनकपुर को भी उसमें जोड़ने का काम किया। ये हमारा जो रामायण सर्किट हमने बनाया है उसमें हमने जनकपुर को भी जोड़ा है। लेकिन मैं समझता हूं कि दो देशों के बीच में आध्यात्म का मामला हो या पर्यटन का मामला हो या संस्कृति का मामला हो, ये आध्यात्म, पर्यटन और संस्कृति की जो त्रिवेणी है इसको स्थापित करने का काम ये दोनों सरकारें धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही हैं, जिसका लाभ जितना सनातन परंपरा को जीने वाले भारतीयों को मिलेगा उसका उतना ही लाभ श्रीलंका के लोगों को भी मिलेगा। मैं इस कॉन्फ्रेंस के सभी आयोजक जो हमारे साथी हैं, मित्र हैं, उनको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज के अवसर पर उन्होंने मुझे यहाँ उपस्थित रहने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बहुत बहुत सुंदर। हेलो माइक। Thanks a lot, sir, for that.
And I now request Honorable Vidra Vikramanayake ji, Minister of Cultural, Religious and Buddha Sena Affairs of Sri Lanka, to give his words. With the permission of Sri Vinod ji, who is the co-chairman of this session, shall we make this an interactive discussion? Okay. May I go down the stage? I always like to do things that are not meant to be. Which supersedes which? Politics, economics, or culture? Okay, who says culture? Who says politics? Who says economy? Economics? We are all wearing clothes. Are you sure? These are made out of threads. You remove thread by thread. No cloth. History is a thread. Economics is a thread. Politics is another thread. So what is the cloth? Culture. Culture. So culture supersedes everything. Not because I'm the Minister of Culture. But are we cultured? Are we cultured? Yeah, we are always trying. Only words. Only words, no action. Thousands and thousands of years ago, when Valmiki recited Ramayana, he wanted us to get rid of hatred, envy, anger, ego, greed. Reading Ramayana several times, have we got rid of this? Huh? So where is the culture? Where's the culture? Culture is in the department. Culture. But even there is no culture. Enough of talking. We have minced words many times. We cannot even trace back what we talked a while ago. So let's, a continuity of Bala's presentation. What is the next step? What should be the next step? To imbibe that culture. Interact between cultures. The two great cultures. I don't say Indian culture is greater than Sri Lankan culture.
I'm not telling that Sri Lankan culture is greater than Indian culture. No, two cultures you cannot compare. My good friend, parliamentarian, Nick, from Switzerland. We can say that they may not have a history of maybe thousands of years. No. But they also have a culture. You have to respect that. We don't do that. We don't respect one another. We don't trust one another. So how can we progress? How can we develop? If we don't respect one another, if we don't trust one another, how can we develop? There is no progress. There is only regression. We are worse than animals. Am I correct? So, if we can come up with a steering committee based upon your suggestions to get these two cultures together with the objective of, as the Ramayana, with the objective as Ramayana, get these two cultures together. Let us build bridges over hearts, connecting the hearts and minds. Not the physical bridges, not the physical bridge connecting India and Sri Lanka. We have been building a lot of things. Have they taken us anywhere? Look at go out of this building, see around, you can see a lot of buildings. 50 years ago, there were no high-rise buildings, but now we have high-rise buildings. So with our ego has also risen. The greed has risen. The jealousy has risen. So what happened to that human being? Where's the culture? Where's the cultured animal? We are the highest animal of this animal kingdom. That is why we are called Manusha. So let us have a steering committee. That steering committee should be able to influence your government. I don't know which particular department or the ministry. As a conclusion, or towards pushing, bringing these two cultures together. Vinod ji said that once we have this Ramayana trail, that can benefit both countries, especially Sri Lanka, yes, I know. We are willing to be a part of this Ramayana trail. Though there are no, like I said yesterday, archaeological facts or any archaeological findings, yet you can visit where the Sita was imprisoned. Still there are, that particular place is called Sita Area. And you can see there are certain patches of land. Nothing grows. It's barren. That was the place burnt by Hanuman. But no evidence. But there are, to a certain extent, yes,
From generation to generation, that story has been told and retold. That is Ramayana. So based upon this, let us build. Yesterday, Honorable Trivedi was here. So why can't we approach him? You all can approach him. We'll do our part from Sri Lanka. The moment we go there, we'll start bridging the bridges to connect the hearts and minds. I hope you all will take care of your responsibility and your share, because this is a 50-50. Win-win situation. Both countries. Yes, beneficial. Beneficial to not only to Sri Lanka and India, but to the whole world. To the whole world. Not only for today, but also for tomorrow, future. That is how we should build today, with the future in mind. Learn the lessons from the past. Don't live in past. We are living in past. We talk of Ramayana, we talk of Rama, we talk of Ravana, we talk of Sita. That's all. We are not building upon that. We have to build upon that. That is what. So, the lady here, the professor, sorry, I didn't get you here, Shivani, she quoted so many things from Ramayana. And Bala also gave his views, how the continental drift has made us apart, made two different countries, India and Sri Lanka. This is happening even now while we talk. Every moment this continental drift is happening. I don't know, maybe in about another 200,000 or I forgot, 2 billion years or what. Australia will come. Australia will hit Hong Kong and merge with Asia. That is, don't worry, we won't be like that. This is happening even now. Are you happy that due to continental drift, there's a separate country, Sri Lanka? What if I say that India was ruled by Sri Lanka? It's not true. How can you say that? No, I was just joking. Because that this might fire another India-Sri Lanka clash. Past is there to learn lessons. Future you are not sure of. The given moment is now. Let's act now. So get these things together. Lot of ideas, views has been mooted. Take these views, take their motives. Let's bring them together. Urge, verge, and merge. Let's merge. That's enough? Okay.
I hope that will do the necessary backup for Bala's presentation and also for the other presentations made by the honorary persons who contributed a lot, not just for us to think, not just for us to talk about, but also to act upon. Thank you. Thank you very much. This ends the session. Indo-Sri Lanka Ramayana Circuit, Prospects and Future. But then, this doesn't end the relationship and prospects and future. Would like to have all of us to go to Sri Lanka and see various spots in the hearts of the people. Now I'll request, आप रुकेंगे? विनोद भैया रुकेंगे वहीं? रुकेंगे अभी भागेंगे नहीं? Bala, please come on the stage. Bala, please. Ji, just keep, just a few minutes, just 2 minutes. I'll request our Honorable Nicholas Samuel Guggerji from Switzerland to come on the dais, come on the stage and felicitate the guests. Honorable Gugger ji is Member of Parliament and he is first Indian origin parliamentarian. So here is our Honorable Minister from Sri Lanka is giving a token to show the exchange of culture to us. And our Honorable Minister just told something. I will translate it to English, but let us first listen from his words in Hindi. मैंने माननीय मंत्री जी को ये सुझाव दिया है कि श्रीलंका सरकार की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव आता है तो भारत सरकार की तरफ से हम प्रयास करेंगे कि एक ज्वाइंट कमेटी बन जाए जो वनगमन पथ के संदर्भ में क्या क्या किया जा सकता है उस दिशा में काम करेगी और एक सार्थक परिणाम दोनों देशों के बीच में ये हो सकेगा, इसके अच्छे सार्थक परिणाम आएंगे और वो भी इस बात से सहमत है कि वो इस दिशा में काम करेंगे. So that is that sir is saying that we'll have a committee soon with the help of sir and from the top level committee of both India and Sri Lanka. And thanks a lot. And like sir, yesterday there are people who have asked that we need the invitation to visit Sri Lanka. And here is the logo saying visit Sri Lanka. And sir is inviting. Is this visa? You just ask about the visa. Yes, yes. If ever this Ramayana trail is to be a reality, we'll make an exemption for the visas. Thank you, thank you, thank you. Thank you. But not for the ticket. Sir, may I add one more point to that, sir? So when the international tourists are coming from various parts of the world to see Ramayana places in India and also in Sri Lanka, can we try for a common visa for the other countries to travel with one visa to both the countries? Can we propose something like that? So I think that also can be discussed in the next committees. In the committees, yes. That's
Now the Honorable Minister from Sri Lanka will be giving the symbol of exchange of knowledge, Ganapati ji, to the Honorable Member of the Parliament, Switzerland. So, Honorable Minister of Sri Lanka, you made the best joke, you made my day. He said, yesterday we shared a piece of Swiss chocolate, but today he gave me a bigger gift. So I hope to see you soon to have our exchange in culture, because love can do it. And so I'm very happy to meet you here and to share with you, all of you, a little bit time. Felicitation. Honorable Nick will felicitate the So, I would like to say thank you to our dear Dr. Akhilesh. Can you come, please, to the stage? Dear Dr. Akhilesh, you come in the middle, please. You made a big work, but you have always also a good sense of humor. So I thought yesterday how we can felicitate this noble man. And as you heard, I'm a go-between in between the cultures. And he said maybe Switzerland has not an old culture. But I was laughing, but because I brought one culture which everybody knows. He spoke about our Swiss chocolate. But what is the second culture we have in Switzerland? Swiss chocolate, yes, first. Swiss watches. But Swiss knives. You heard from the Swiss knives? Okay. So, as you know, he's a doctor, a medicine doctor, and that he is prepared for his next operation out in the field. I brought a rainbow Swiss knife for him. So, dear doctor, with this colorful Swiss knife, I wish you all the best and blessings by the next operation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Next session to be prepared fast. Now, मेरा वो देखिए एक कोई भी बहुत बढ़िया एक मैं अभी और देख लेता हूँ एक मिनट As always, the conferences happen, there is always short of time. And we are running just half an hour, it's acceptable. The parascientific approach, this is one plenary session. One plenary session, the parascientific approach to Ramayana and spirituality of India. I would like Professor Dr. S.P. Gautam to come on the stage for his presentation on Ram Brahma Paramaarth Rupa की वैज्ञानिक व्याख्या. Professor Dr. Raghavendra Gumashta from Bhopal. The topic is epidemiological transition, Navada Bhakti and the signature gene expression in sequence enablers.
quantum entanglement to break bondage of Maya. Dr. Swaraj Nayak will be speaking on a role model of medical ethics and Ramayana. And then in this session, we'll also release the book Saral Jain Ramayana. We'll also release the book Saral Jain Ramayana, which is written by Brahmachari Kastur Chand Nayak ji, who was from Jabalpur itself. Professor S.P. Gautam to start his paper. सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मैं कृतार्थ हुआ कि यहाँ मुझे एक अवसर मिला मानस के विषयों में मानस पटल में लाने के लिए। मैं दीदी ज्ञानेश्वरी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये विषय मेरे लिए चुना। और एक विशेष बात है कि मानस लिखी क्यों गई, इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। संत सरल चित जगत हित, मानस लिखी गई है कि संतों का चित्त सरल होता है और उसमें संसार का हित निहित होता है। और उस निहितार्थ जब मानस लिखी, और ये मानस के लिखने का गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया, समय कम है इसलिए ज्यादा विस्तार पे नहीं जाएंगे, कि भगवान शिव ने जब पार्वती जी ने उनका कहना नहीं माना और विषाद से सती के रूप में अपने शरीर का अंत कर लिया, तो लगा कि जीवन में मनुष्य के कितना ही साथ रहे, जब तक साधना नहीं होगी तो विषय खत्म हो जाएगा। विषय स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तीन शब्द हैं। फॉर द पर्सन्स हु नो ओनली इंग्लिश, let me say in few sentences, then I'll speak in Hindi. That Rama Brahma Paramaratha Rupa is meant to felicitate the life forever without sorrow. And once it realizes the instinct of God is embedded in everybody's body in the form of Brahma, and it acts only the betterment for life, then the life of human being is full of joy and it never felt in sorrow. राम ब्रह्म परमार्थ, ये तीन शब्द हैं। जब हम राम के विषय में जानते हैं, ये बहुत अच्छा कहा है, नेति नेति। वेदों ने कहा कि नेति नेति, इसका ज्ञान नहीं हो सकता, तो 10 मिनट में भगवान राम का मिलन और परिचय यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन राम जी ने कहा कोसलेश दशरथ के जाए। हम कौन हैं? कुशलता के साथ इन दशेंद्रियों के रथ के माध्यम से इनकी तपस्या से आए हैं। भय प्रकट कृपाला, इसका प्राकट्य होता है। अब दोनों चीजों का आप देखें कि राम सगुण है, साकार है, ब्रह्म निर्गुण निराकार है। ये दोनों आपस में कैसे संबंधित हैं? क्या ये दोनों संबंधित हैं? यदि हैं तो विज्ञान की दृष्टि क्यों डालनी चाहिए? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा एक पंक्ति में लिखा है, अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। मानस के में मनुष्य के जीवन के चारों आयामों को, अर्थ धर्म काम मोक्ष को, ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से सोचने के लिए लिखा गया है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ज्ञान और अध्यात्म तो काफी चला,
लेकिन विज्ञान नहीं चला जो बहुत सरलता से भक्ति तक आपको पहुंचा सकता है। अब मैं कुछ वैज्ञानिक व्याख्या इसकी देने की कोशिश करूंगा। कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध भेदा। तो ये निर्गुण और सगुण में अंतर क्यों नहीं है? आप प्रारंभ करें कि हम बने किससे हैं, तो कहा गया है गगन समीर अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये वह सेतु है जहां सगुण और निर्गुण और जड़ और चेतन मिल रहे हैं। इन पंच तत्वों का विस्तार से नहीं जाना। पंच तत्वों का जो विषय है यहाँ इसमें श्रीमद् भागवतम में भी दिया है कि कैसे इनका निर्माण होता है। ये पंच तत्व जब शरीर बनते हैं तब एक सेतु बन रहा है जो निर्गुण निराकार को सगुण साकार में लाता है। और ये निर्गुण निराकार सगुण साकार केवल यही नहीं रुक रहा, मानस में इसको परमाणु के नीचे तक ले जाया गया है। परमाणु की संरचना और परमाणु से बनने वाला पदार्थ, इन दोनों को शामिल किया है, तब राम और ब्रह्म के बीच बात होती है। क्या कह रहे हैं? परमाणु को देखें, शायद आगे की ये परमाणु की संरचना देखें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है। आनन अनल अंबुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ये परमाणु की संरचना है, वो परमाणु शब्द अन्य जगह पे आया है, मैं बताऊंगा। परमाणु की जो संरचना है, बाहर तो आनन है, मुख है जिसमें आग जल रही है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ होते हैं जो संसार की समस्त क्रियाओं के वाहक हैं, उनके बिना कोई कार्य संसार में होता नहीं है। आनन अनल अंबुपति जीहा, उसके पीछे प्रोटॉन है जो उसका विपरीत धारक है, आवेश में भी विपरीत है और परमाणु को स्थापित रखता है। एक स्थिति है। और इसमें स्थिति आप देखें कि तीन शक्तियां हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक जगह सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससी सदा हम कहूं परिपालय। यहां तो केवल संरचना दी है, अब उसकी कार्यविधि बता रहे कि ये करते क्या है। तो जो प्रोटॉन की शक्ति है, जो हमारे यहाँ आत्मा है, आत्मा सदैव स्थित है, आपके परिपालन के लिए है और तब तक नष्ट नहीं होती। प्रोटीनों न्यूट्रिनों का विकास कैसे होता है उसके एस्पेक्ट्स पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि देखें कि प्रोटीनों न्यूट्रिनों कब बनते हैं, जब शरीर संकट में हो जाता है, परमाणु संकट में हो जाता है। तो परमाणु के प्रोटॉन के रूप में हमारा ब्रह्म अंश है, इसीलिए हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि विष्णोहम शिवोहम। उसके आगे है सर्व सर्वगत जो स्थितियां हैं, तीन चीजें और देखें, उसके बाद में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा जो लगातार चल रहे हैं, उनके विषय में एक चौपाई मैं आपके लिए लाना चाह रहा था। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। जिसको आत्मा कहते हैं, ये कार्य दृष्टि से एकदम उदास रहती है, निश्चल रहती है और कब तक इलेक्ट्रॉन को काम करने देती है, जब तक वह कर सकता है। इलेक्ट्रॉन के गुण क्या हैं? अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को देख लें और आज सबसे ज्यादा भयभीत क्या, इसकी शक्ति कितनी है? अमोघ है, अजित है। आज विश्व यदि सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में आता है तो परमाणु बम के लिए आता है। और परमाणु के लिए बाबा ने कैसा लिखा, गोस्वामी जी ने, लव निमेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड, भजस न मन ते राम को काल जासु को दंड। और ये परमाणु इस संसार को तुरंत कैसे बनाता है। अब फिर एक सेतु की बात मैं कर रहा हूं कि यह
निराकार ब्रह्म सगुण साकार ब्रह्म में तुरंत कैसे परिवर्तित हो सकता है, प्राकट्य कैसे होता है, मैं विज्ञान की बात भी करूंगा। और विज्ञान के साथ ये देखें, ये दीदी के श्री चरणों में पुनः नमन, आपने ही मुझे इसमें वैज्ञानिक व्याख्या की दृष्टि दिया। सेतु बता रहे हैं कि लव निमेश मह भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। 1 सेकंड के 1/1000वें स्थान पर इस संसार का निर्माण होता है। परिचय अभी केवल हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, सेतु की बात कर रहे हैं कि वह ब्रह्म जो राम बनता है, जिसका प्राकट्य होता, और कितने जल्दी प्राकट्य होता, लव निमेश मह भुवन निकाया, और पूरे संसार का निर्माण होता है। तो अब इनको देखने की दृष्टि हमारी कैसी है? एक दारुगत देखिए एकू, पावक सब जग ब्रह्म विवेकू। इनको देखते कैसे हैं हम? जो अज्ञानी लोग हैं तो उस ब्रह्म को लकड़ी के स्वरूप में यदि रखी है तो लकड़ी देखते हैं, लेकिन जो विवेकशील व्यक्ति हैं तो उन्हें मालूम है लकड़ी बनी किससे है? अग्नि से। अभी आश्चर्य लगता है कि लकड़ी और अग्नि, लेकिन ये विपरीतार्थी गुण वाले ब्रह्म और राम, ये दोनों विपरीतार्थी दिख रहे हैं। लेकिन आप देखें, किसी भी पदार्थ का जब आप सिंथेसिस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के संघनन से ही उसका पदार्थ बनता है, और जब कोई भी चीज जलती है तो उसका अंत भी उसी अग्नि में होता है। तो विपरीत दिखने वाले शब्द वस्तुएं भी उसी ब्रह्म से बने हैं, और निराकार से साकार की ये यात्रा लगातार चलती है। और इसीलिए कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई। अब यहाँ विज्ञान की बात फिर ध्यान से देखें। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन? ये बार बार कहते हैं कि नहीं, ये राम नहीं हो सकता, ये शरीर नहीं बन सकता, लेकिन कैसे बनता है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आयोनाइजेशन होता है, र और म अलग होते हैं, वो दोनों बाकी पदार्थों को अपने में एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए पानी को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा गया है। इसके 2 कंपोनेंट्स है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इनके परमाणु जब अलग होते हैं तो एक जलता है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। लेकिन जब इनमें सेतु बन जाता है, जब ये सगुण रूप धारण करते हैं तो पानी बन जाता है, और पानी बनते ही ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट बन जाता है, विश्व विलायक बन जाता है। यह ब्रह्म का स्वरूप है जो विश्व को अपने आप में समाहित करता है। स्थिति यही नहीं है। बाबा ने 2 बहुत अच्छी बातें करी मानस में, पूरा ग्रंथ ही मंत्रमय है, लेकिन आप देखें उन्होंने 2 साधारण बातों से विश्व की स्थिति को निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म के विज्ञान से तिरोहित कर दिया, पूर्ण कर दिया। क्या कहते हैं? सोई जल अनल अनिल संधाता, होई जलद जग जीवन दाता। अब इस संसार और मानव का निर्माण, ये सारी जीव का निर्माण कैसे होता है? वो कहते हैं जैसे पानी जब भाप और ताप के साथ बादल बनाता है तो पूरे वो बनाता क्या क्या है? होई जलद जग जीवन दाता। पदार्थ भी बनाता है जिसको हम जड़ तत्व कहते हैं, और जीवन भी देता है। वही नहीं, निराकार और साकार की फिर बहुत अच्छी बात की है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। एक तरफ आप कहते हैं कि पानी निराकार है, जिस बर्तन में रखेंगे उस तरह हो जाएगा, ऊर्जा उससे हटा लें, जैसे ऊर्जा कम करेंगे ये ठोस हो जाएगा और ये उपल बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, उसमें जो आकार बनाना है, जिस आकार में लाना वो आकार बन जाएगा। आशय संसार में राम ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के संघनन से व्यापकता आती है। ऊर्जा ज्यादा विश्व व्यापक हो गया, ऊर्जा कम स्वार्थी हो गया।
आप देखें, केवल ऊर्जा आपको देना है। यहाँ 3 शब्द, मैं 4 शब्दों को डिकोड करना चाहूँगा। क्यों? मनुष्य को यदि अपना जीवन सार्थक करना है तो उसे ये जानना चाहिए कि निराकार ब्रह्म सब में है। साकार ब्रह्म तो जब अवतरित होगा तब मिलेगा, लेकिन निराकार ब्रह्म हमारे सब के सम्मुख सदैव रहता है। और उसके लिए एक शब्द दिया है, कृपा सिंधु भगवान। मैं बहुत लंबी पूरी चौपाइयाँ नहीं कह रहा। हनुमान जी ने कहा कि आप भगवान हैं और कृपा के सिंधु हैं। अब ये भगवान कौन है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये जो 5 तत्व हैं यही भगवान है। और ये कृपा के सागर हैं। ये कभी किसी को खुद के उपयोग के लिए मना नहीं करते। और ये बनते कैसे हैं? भगवान, भगवाना, भगवानु। क्या हो रहा है? धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। अब यहां धर्म क्या है? एट्रीब्यूट। इति धारित सुधर्मा, जो पदार्थ में धारित हैं गुण, वह धर्म है। और जो धर्म है उसका आधार वही ऊर्जा है। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, सौर मंडल का सूर्य जिससे किरणें आती हैं। जब कहा है लइहों दिनकर बंसुधारा, भगवान ने जन्म के पहले ही कहा मैं सूर्य कुल में जन्म लूंगा, भानु बनूंगा और तुम्हें किरणें भेजूंगा। और उन किरणों से क्या बन रहा? धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम। यह एनर्जी ही गॉड है, किंग है। राजा राम स्वबस, इंडिपेंडेंट है। और भगवानु, भगवान के आगे बड़ी ऊ की मात्रा जब लगा देंगे, ऊर्जा। यह ऊर्जा इन 5 तत्वों को जोड़ती है। और तब कहते क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यदम शरीरा। लेकिन ये शरीर और कैसे बना? व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। ये भगवान राम के सगुण की ऊर्जा जब व्यापक हो जाती है तो भगवान के आगे चिपक जाती है। और जब आगे चिपकती है तो बड़ी डंडी जो है भगवाना, बड़ा डंडा जो है वो आवरण है, एनकैप्सुलेशन है, बॉडी है, शरीर है। जिस तरह का आवरण बन गया उसका नामकरण उस तरह हो गया। केला, बिही, आदमी, गाय आदि आदि, ये भगवाना है। तो व्यापक विश्व रूप भगवाना। इस संसार में कहते हैं मैं हर स्वरूप में हूं, मैंने ही ये शरीर बनाया है। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। ये केवल अध्यात्म की दृष्टि से नहीं, मैं लगातार विज्ञान की दृष्टि से बात करने की बात कर रहा हूं। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा कहा। प्रारंभ में उन्होंने कहा वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ, और राम सबसे बड़े विज्ञानी हैं, ये घोषणा हुई। और अंतिम श्लोक जब समाप्त करते हैं रामचरितमानस का, तब कहते हैं पापम पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। जो भक्ति के माध्यम से रामचरितमानस को पढ़ेगा उसे भक्ति मिलेगी, लेकिन जो विज्ञान के माध्यम से चलेगा उससे मैं स्वतः मिलूंगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता हो जाएगा कि मेरी यह ऊर्जा जड़ में भी है, चेतन में भी है, जीव में है। तब वो चौपाई कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। सब राम के अंदर हैं, लेकिन यहां भी शब्द 2 आ गए, माँ और या। राम मयो, राम का माँ और सी का या, वह किरण। इसीलिए वो कहते हैं श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की। विषय है अब यहां माया को विस्तारित किया है कि ये राम की माँ और सी का या, इन 2 के बीच में डंडे हैं। दे आर द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इस संसार में सब कुछ माया जो है, लगातार कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन इन वांट ऑफ एनर्जी। इस संसार में जो कुछ हो रहा है ये माया है। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजी में कह देते, बोले इल्यूजन है। भैया इल्यूजन नहीं है, ये माया है, लगातार काम कर रही है। और लगातार काम करने के कारण मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। कितनी ऊर्जा गई, कितनी ग्रहण की गई, बाकी ऊर्जा यहाँ है। इसीलिए कई बार करंट हवा में लगता है।
तो विषय ये है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अब इसके स्वरूप को ध्यान देना है जिससे मानव का जीवन कल्याणमय हो जाए। जब आप ये स्वीकार करें कि वही राम कोसलेस दशरथ के जाए, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। किसके हितकारी हैं? कुशलता के अधिकारी हैं। कौशल्या तो माँ है जो इसको परमाणु के रूप में धारित करती है, लेकिन ये सब का हित करते हैं। इस संसार का कोई भी कार्य ये बताएं कि क्या बिना ऊर्जा के है? क्या इस बिना ऊर्जा के कुछ भी हो सकता है? जो देख रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत, फिर कहा सबके पदार्थ में, और इसकी क्लाइमेक्स स्थिति में समय बहुत कम है, मुझे मालूम है डॉक्टर साहब कह रहे थे आधा घंटे लेट है। विषय ये है कि इन परिस्थितियों में तीन गुण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आत्मा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक राजा है जो कोई काम नहीं कर रहा, न्यूट्रॉन। रंग है वो दिन भर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, जो सारे संसार की क्रियाओं को चला रहा है। और फकीर आत्मा प्रोटॉन। जब तक परमाणु के अंतिम छोर में कष्ट न खड़ा हो जाए तब तक प्रोटीनों नहीं निकलते, तब तक न्यूट्रॉन अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करता और वह उदास की स्थिति में सदैव बना रहता है। एक और स्थिति है, आप देखें कि इस इलेक्ट्रॉन को जिसको लगातार चलना बताया, उन्होंने कहा कि ये संसार में मैं लगातार चलता हूँ, लगातार काम करता हूँ, और इसलिए ही संसार को जीवन कहा है। पानी में जल, बहुत अच्छी लाइन दी है, केवल ऊर्जा के आधार पर, कि जल और बारी में अंतर क्या है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अब जो किताब में अक्षर लिखे हैं उसमें और जो वाणी में आ रहा है उसमें क्या अंतर है, वो भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन अंतर है। जब ऊर्जा भगवान आपके पास हैं तब वो वाणी बनती है, तब वो जीवन बनता है, और नहीं तो वो गिरा रहता है। गिरा अर्थ जल बीच सम, पानी रखा हुआ है, ये जल है, बीच जब बहने लगे और जब बहेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो एनर्जी जिसको राम गति दे रहे हैं। जैसे ही एनर्जी आती है जल वारी से भिन्न हो जाता है, लेकिन उसका अंत कहाँ होता है और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, कहने को अलग अलग नहीं है, लेकिन बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जाना कहाँ चाहिए ऊर्जा को? जिस अंत्योदय की हम बात करते हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की बात करते हैं, उस तक ऊर्जा जानी चाहिए जब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना हो जाए। जितनी आप में शक्ति है, शक्ति दे पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आपको ऊर्जा पहुंचाना है। अब दूसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया, गोस्वामी जी ने। एक तो दिया शरीर के माध्यम से, दूसरा दिया जल के माध्यम से, और तीसरा शरीर के माध्यम से एक और अच्छा उदाहरण है, वो मैं बता दूं, जिसमें आप ब्रह्म और राम को शरीर के अंदर पाते हैं। आप भोजन करते हैं, भोजन करिए त्रपत हित लागी, सो तब असन पचवे जठरागी। आप भोजन करते हैं, लेकिन उसको उसका पाचन कौन करता है? जब फिजियोलॉजी में जाएंगे आप कहेंगे ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम, लेकिन वो एंजाइम लास्ट में क्या करता है? ऊर्जा देता है या ऊर्जा लेता है? ब्रह्म की अपने शरीर में लगातार अवस्था को महसूस करने के लिए पंच तत्वों और यह भोजन का पाचन। शायद जो कोई कहे मैंने भगवान नहीं देखा, तो मैंने तो भगवान मिला दिया, आप देख लीजिए पंच तत्वों से आप बने। दूसरा, लगातार भगवान आपकी मदद कर रहा है हर क्षण। अपने मुंह और नाक में बंद करके नाक और मुंह बैठ जाइए, 5 मिनट के बाद बात करेंगे, महसूस होगा कि इस भगवान के बिना हमारा काम नहीं चलता। बार बार कहते पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन पूरी हवा है और पुत्र ऑक्सीजन है, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं।
इन तत्वों को जब हम सब में देखते हैं तो हमारी दृष्टि विराट होती है, और जैसे ही दृष्टि विराट होती है भेद समाप्त हो जाते हैं। भेद के समाप्ति के साथ ही हम ऊपर उठ जाते हैं। फिर ये वाणी विलास नहीं रह जाता। आप केवल इस चीज को याद करते रहें कि खाना पचा कौन रहा है, सांस ले कौन रहा है जब मैं सो जा रहा हूं। फिर तीसरा उदाहरण मैं प्रकाश का देना चाहूंगा। प्रकाश के माध्यम से बाबा जी ने बहुत अच्छी बातें की हैं। उसमें लिखा है सहज प्रकाश रूप भगवाना। अभी मैंने भगवाना की परिभाषा बताई, ये शरीर भगवाना है, लेकिन इसका यूनिट क्या है? प्रकाश का फोटोन। कल्पना कर सकते हैं, भानुकुल भानु, सूर्य से आने वाला फोटोन जो केवल एनर्जी बंडल है, उसमें अभी तक आवेश नहीं आया क्योंकि वो किसी से टकराया नहीं। जिम जीवहि माया लपटानी, अभी माया नहीं चिपकी, फोटोन ज्यों का त्यों है, ऊर्जा का बंडल है। सहज प्रकाश रूप भगवाना। आप सोचें कि हमारा मोनोमर क्या है, यूनिट क्या है, हम बने किसके हैं? प्रकाश के। और इस प्रकाश से जब बने हैं तो हम अंधकार में क्यों जाते हैं? चाहे क्रियाओं की दृष्टि से, चाहे विचार की दृष्टि से, चाहे नकारात्मकता की दृष्टि से। प्रकाश में तो ये नहीं होता। प्रकाश में सदैव सकारात्मकता रहती है। कहा है सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। उसके बाद फिर इस विज्ञान का अंत हो ही नहीं सकता। आप स्वीकार तो कर लें कि आप प्रकाश पुंज हैं, और यदि प्रकाश पुंज नहीं होते तो ये कार्य नहीं कर सकते। We are little hesitant to say that. Oh, I will oblige. I am an obedient person. राम, मेरा आज का ये जो भी वक्तव्य है, दीदी श्री ने कहा कि आप तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा पे बोलें, और मेरे ख्याल से यदि जीवन में आप ये अद्वैत वेदांत का और गीता का, अद्वैत वेदांत में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और गीता में गुणाः गुणम वर्तते, इन दोनों का निचोड़ है, और यह वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक है। जब चाहे प्रमाण ले लें। इसमें एक अच्छी बात यह है, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने नाक मुंह बंद करने की बात की है, हनुमान जी से बड़ा झगड़ा है आपका, बंद कर लीजिए, हमें हनुमान को नहीं चाहिए, सो जाइए। हमें पानी नहीं चाहिए, वरुण भगवान नहीं चाहिए, सो जाइए, पानी नहीं पीजिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। पता चलेगा कि हम आग जिसको कहते हैं आप निर्जीव है, टेम्परेचर 106 बढ़ा दीजिए, 76 कर लीजिए, फिर जी जाइए। तो इन पंच तत्वों को ही भगवान माने, जिससे पर्यावरण और विश्व वसुधा कुटुंबकम की जो भावना है वो पता चले कि जड़ जीव चेतन में कोई अंतर नहीं, सब में ब्रह्म है, सब में राम है। इसीलिए पुनः सीए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत बहुत धन्यवाद, संत चरणों को नमन। उस तरफ now I'll request Professor Dr. Raghavendra Gumashta from Bhopal to speak on his topic. The topic is lengthy and topic itself is big one, but then he will try to elaborate it in a precise manner. हम बात करेंगे सगुण से निर्गुण की यात्रा वैज्ञानिक रूप से कैसे होती है, और यदि हम अपने उद्भव और विकास की बात करें तो हम ये भी बात करेंगे कि हम अरूप से अरूप की यात्रा कैसे करते हैं। क्योंकि
जब हम विकसित होते हैं, एम्ब्रियो के रूप में होते हैं, तो सेल सभी एक जैसी होती हैं। उनको बाद में निर्देश प्राप्त होता है कि आप लीवर बन जाओ, लंग्स बन जाओ, हार्ट बन जाओ, ब्रेन बन जाओ। और इसी तरीके से हम जब राम मूर्ति की प्रार्थना करते हैं, मूर्ति को प्रणाम करते हैं, राम को प्रणाम करते हैं, शब्द राम को प्रणाम करते हैं, भाव राम को प्रणाम करते हैं और फिर ओम राम पर पहुंचते हैं, वो यात्रा वैज्ञानिक रूप से कैसे होती है? I like to bring your kind attention to these few terminologies in simplified manner. Epidemiological transition, Navadha Bhakti, you know very well, signature gene expression, and quantum engagement. Since Professor Dr. S.P. Gautam just now illustrated the importance of the physics and the movement of the electron, proton, and neutron, I'll tell you, recently in 2022, the Nobel Prize has been awarded on quantum engagement. And what does this quantum engagement say? The communication from molecules going around anything happen instantaneously to any distance without use of any medium. And it shows that whatever prarthana we do, it instantly reaches the God. देर है अंधेर नहीं है वाली बात भी गलत है. The Nobel Prize winners have proved. And the epidemiological transition, however, happens very slowly. धीरे धीरे हम अपने विकास क्रम में एक जीवन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे हजारों जीवन में धीरे धीरे विकास क्रम में गतिमान होते हैं और अंततः चरम लक्ष्य ओम को प्राप्त कर लेते हैं. लेकिन यह यात्रा तेजी से कैसे हो सकती है, उसका उदाहरण कल रात्रि एक नाटिका के माध्यम से, लोगों के कथन के माध्यम से बताया गया. उसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी की जाएगी. और इसमें हम मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा द्वारा कैसे मुक्ति प्रदान की जाती है और उसकी वैज्ञानिक व्याख्या क्या है, वह भी हम आपको अवगत कराएंगे. और इससे हमारे माया के बंधन जो खुल जाते हैं, जिसको कहा गया है व्हाट आर दोज बॉन्डेजेस ऑफ माया इन साइंटिफिक टर्म्स. We know all very well that the Navadha Bhakti is Shravan, Kirtan, Ismaran, Pad Sevan, Archan, Vandan, Dasya Sakhya and Atma Nivedan. आत्म समर्पण सबसे उच्च भाव क्या है. यद्यपि इनमें आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब हम गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं. और इसीलिए सत्संग और भावधारा की बात कही गई है. भावधारा वो धारा जो शिवलिंग पर लगातार जल सिंचन करके हो रही है, वो एक प्रतीक है कि हम अपने भाव को शिव से जोड़े रहें और जिन पर शक्ति स्वयं प्रकट हैं. विज्ञान में we talk about eugenics and epigenetics. Eugenics is, we believe that the genetic quality can be improved by good selection of the genes. अच्छे जीन्स वाले लोगों से आगे क्रमोन्नति हो मानव जाति की, तो वो यूजेनिक्स होता है. एपिजेनेटिक्स, यहां पर जब हम बैठे हुए हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, वो वातावरण यद्यपि जीन की संरचना विशेष में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन जीन के आसपास जो एक
चुंबकीय क्षेत्र जैसा बना रहता है, वो उस जीन को खोलने में और बंद करने में सहायक होता है। और जब जीन बंद हो जाता है, इसका मतलब होता है कि आपके अच्छे लक्षण, अच्छे गुण, अच्छा प्रकाश बंद हो गया है। और जब जीन खुल जाता है तो आपकी ऐसी बातें जिसको आप स्वयं भी या अन्य भी नहीं जान सकते हैं, वो हो जाती हैं। As has been illustrated by example of Kalidas, he was cutting the same branch of the tree on which he was sitting, but thereafter, by God's grace, his right genes, appropriate genes opened, acetylation happened there, and suddenly he becomes Mahakavi Kalidas, unparalleled till date and probably forever. So what phenomena happens? There are two phenomena. One is methylation and another is acetylation. This is scientifically proved that if methylation happens, then the expression of gene is inhibited. And when the acetylation happens, the expression of gene is there in its full capacity and resonance. So we should try our best in sequence for eugenics, epigenetics. But what is the paragenetics? There is no terminology yet treating anything as paragenetics. But I have coined a new terminology, paragenetics, which resembles and goes hand in hand with science and the world. And this paragenetics says that the change of gene expression in toto can be said as paragenetics. And the undeciphered art and science is known to those who have achieved religious heights, that is great saints and bhakts and gyanis, about the paragenetics. They know how to open the bondages of Maya. And you know, there are chromosomes which have genes embedded upon it on the proteins which are called histones. So, there have been various theories of science. डार्विन की थ्योरी कहती थी कि क्रमोन्नत विकास होता है, धीरे 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 कुछ नहीं कहता होता। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ता है, जो कहता है के धर्म कर लूंगा, जो कहता है कि छोटा छोटा काम करूंगा, नहीं, बड़ा काम करो, तेजी से करो, पूरी तन्मयता से करो, तब परिवर्तन होगा। और यही जीन्स में भी है, यही धर्म में है, यही भाव में है और यही प्राप्तियों में है। तो ये जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं डार्विनिज्म से, नियो डार्विनिज्म से, और फिर इंटीग्रेटेड सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, उसमें ये जो व्यक्ति आपको आगे हम दिखा रहे हैं, ये आपके जेनेटिक ट्री को, आपके फैमिलियल जेनेटिक ट्री को, आपके ह्यूमन जेनेटिक ट्री को लेके हाथ में लेकर चल रहे हैं। उसको और आगे ले जाने के लिए, उसको पूरा खोलने के लिए हमको तेज प्रयास करना है, केवल हमारे लिए नहीं, पूर्व में किए गए हमारे पूर्वजों द्वारा और आगे किए जाने वाले हमारी पीढ़ियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए। और वो गति कैसे प्राप्त होगी? This is cell, and this illustrates the DNA which is having this all coding, and we have to only make it decoded in the form of religious expressional heights achieved and achievable by all. And therefore we need to act scientifically upon expression of the genes which are coded and embedded on these proteins. अब इन प्रोटीन्स पर जो जीन बैठे हुए हैं, इनकी ठीक से अभिव्यक्ति, तुरंत अभिव्यक्ति, अद्भुत अभिव्यक्ति कैसे हो, वो है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में से
किसी भी एक बात को हम पकड़ लें तो हम वहीं पहुंचेंगे। 9 बातों को पकड़ के तो शबरी पहुंच ही गई हैं, पहुंच सकी हैं, हम उसको भी चाहें तो पहुंच सकते हैं। वाल्मीकि का परिवर्तन आप सब जानते हैं, अचानक हो जाना। अब कुछ अचानक हो जाता है, धीरे धीरे नहीं होगा। द जेनेटिक चेंजेस विल हैपन इमीडिएटली। जैसे मणिकर्णिका घाट में वो व्यक्ति, ये माना जाता है, विश्वास है, वाराणसी में मृत्यु होने पर भगवान शिव स्वयं उसको राम मंत्र प्रदान करते हैं और मां काली उसके पाशों को, समस्त पाशों को खोल देती हैं। समस्त पाशों को खोलना क्या है? ये वही है जो साधु सन्यासी जीते जी प्राप्त कर लेते हैं। और हम जैसे साधारण लोग, यदि हमने अपने जीवन में कुछ अद्भुत प्रयास किए उनके साधुओं की कृपा से, तो मृत्यु पर्याप्त प्राप्त कर लेते हैं। साधु सन्यासी कुंडलिनी जागरण द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सर्प अचानक उठ खड़ा होता है, वैसे ही कुंडलिनी भी अचानक उठ खड़ी होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु, कि ये धीरे धीरे सुरसुरी की तौर पे कभी उठती है, कभी जैसे मछली चलती हो वैसे उठती है, और कभी जैसे सर्प की गति से होती है, और कभी जैसे चिड़िया उड़ के एक डगाल से दूसरी डगाल पर बैठ जाती है वैसे उड़ती है, और कभी कभी बंदर जैसे कूद लगाता है, फांद लगाता है, वैसे उठती है। तो कुंडलिनी जागरण एक तरह से नहीं होता है, अनेक तरह से ज्ञात अज्ञात तरीके से होता है। और उसका जो हमारे विज्ञान में देयर इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड इट एक्चुअली रिजेंबल्स द रिप्रेजेंटेशन एम्बेडेड इन द chromatin structure, the genetic structure. And here we can say that the Brahma is the thing which is embedded in our genes but presently unexpressed. And when it becomes expressed, then it becomes Lakshmi, the visible deity who gives us the power. The power of power is Lakshmi. And therefore, जब हम अपने क्रोमेटिन नेटवर्क को धीरे धीरे खोलते जाते हैं, या तो अपने प्रयासों से, या हम वाराणसी पहुंच जाएं तरीका, और वहां पर भगवान शिव स्वयं और मां स्वयं हमारे पाशों को निवृत्त कर दें, तो हमारा बंधन समाप्त होगा। अन्यथा क्या होगा कि हम चलते उसी यात्रा में जहां हम एक एम्ब्रियो में अव्यक्त रूप से पुनः सगुण निर्गुण भक्ति करते हुए व्यक्त की यात्रा करते हैं। लेकिन पैराजेनेटिक्स ये भी कहता है कि जो एम्ब्रियो बनता है उसमें मां और पिता से आने वाले जेनेटिक क्रम विकास उसके जीन्स के चारों तरफ एपिजेनेटिक्स के रूप में संग्रहित होते हैं। तो हम जो भी अभी अपनी बात कह रहे हैं वो बात आगे के क्रम में गुणानुक्रम में बढ़ती जाती है और हमारी प्राप्तियां सुनिश्चित होती जाती हैं। इसलिए सत्संग का विशेष महत्व है। एक स्लाइड है जो कि हमारी प्राप्तियों को पूरा अच्छे से वर्णन कर देगी, किंतु इस स्लाइड की प्रतिलिपि हम आपको प्रदान कर सकेंगे। संक्षेप में मैं आपको उसको अवगत करा रहा हूं यहाँ पे। हाउ डज द जेनेटिक एक्सप्रेशन हैपन? When we do nothing, when we do nothing, जब हम कुछ नहीं करते हैं, then it remains in the form of heterochromatin and euchromatin, or we do minimal. When we do minimal, it's in the primary stage. We are at our shop, we are at our business, we are in our office. We are sometimes going for listening, sometimes in kirtan, sometimes Archan Vandan we are doing at our homes. Here, there is no confidentiality required. People may see, people may not see. It doesn't make any difference. You will achieve whatever you are achieving. And the bhav transferability is minimal. You are not empowered to transfer your bhav genetically or in paragenetic fashion to any other person. And therefore visibility is vyakt and the jap is vachik.
आप माला फेरते हैं, उसको आप बोल के भी फेर सकते हैं, दिखता भी रहता है माला चल रही है। लेकिन जब आप एपिजेनेटिक्स के एरिया में जाते हैं तब आप हाई ट्रांसफरेबिलिटी आपको आ जाती है, गुरु से आप प्राप्ति करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और उस समय शुद्ध आधार लेकिन आपका होना आवश्यक होता है। पहले क्रम में जब आप दुकान पर अपने व्यवसाय में बैठे हुए हैं, उधर आपका शुद्ध आधार हो नहीं हो चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप विकसित होते हैं तो आपको विकसित होने के लिए शुद्ध आधार हो गए, तब आपको स्मरण, दास्य या सख्य जैसा जिसका भाव है उसको प्राप्त करके आप सेकेंडरी लेवल पर, द्वितीयक स्तर पर पहुंच सकते हैं। और तब आपकी अर्ध व्यक्त अभिव्यक्ति होती है, और तब आप उपांशु और मानसिक जप प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। वो मंत्र आपको कोई मंदिर में, दिव्य मंदिर में, या ऐसे गांव के भी ऐसे मंदिर में जहां वर्षों से, हजारों वर्षों से संभवतः कोई पूजा होती रही हो, भले आज की तारीख में ना होती हो, इसीलिए हमारे यहाँ महत्व बताया गया है कि सिद्ध स्थानों पर जाना चाहिए, दिव्य स्थानों पर जाना चाहिए, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहिए, शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहिए, गंगा, माँ गंगा को प्रणाम करना चाहिए। तो ये हमारा यूजेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन पैराजेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन वो कृपा के बिना नहीं होता। जब आप ऐसे अवतार पुरुष या अवतार पुरुष के या तो सामीप्य में आ जाएं, या आप उनको देख लें, भले ही दूर से, वहां अवतार पुरुष बैठे हैं, हमने यहां से उनके दर्शन कर लिए। कृपा के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी, जिसको नोबेल पुरस्कार अभी 2022 में मिला है फिजिक्स में, वो कहती है कि दृष्टि से भी, दृष्टिपात दीक्षा भी हो जाती है, आपकी श्रवण दीक्षा भी हो जाती है। कोई मंत्र कह रहा है किसी सिद्ध क्षेत्र में, आप उनके साथ मंत्र, वही मंत्र यदि आप कहने लगें आपको प्राप्ति हो जाएगी, और वो अपने हाथ के स्पर्श से भी आपको दीक्षा प्रदान कर देंगे, और यदि वो आपको आपके सर पर हाथ रख देंगे तो भी आपकी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये इसमें लेकिन आपका शुद्ध आधार होना बहुत आवश्यक है। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के कक्ष में एक व्यक्ति अचानक आया, और वो व्यक्ति को उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको जाने को कहो, और उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पे बाल्टियों से गंगा जल वहीं बह रही हैं, गंगा जी दक्षिणेश्वर मंदिर प्रांगण के बाहर, उन्होंने कहा बाल्टियों से गंगा जल लाकर यहाँ पर सिंचन करो, क्योंकि यहाँ 10 हाथ नीचे तक की जमीन अपवित्र हो गई है। अब आप देखिए कि सत्संग की महिमा का इससे बड़ा उदाहरण और भी बहुत से हो सकते हैं, ये भी एक उदाहरण है। हम याद रखें कि सत्संग में रहेंगे तो अपने आप हमारा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आगे जाएगा। प्लीज कंक्लूड। अब आप देखिए कि जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग है, जैसी जीन्स गुथे हुए हैं उस क्रोमेटिन नेटवर्क में एकदम ठसाठस भरे हुए, वो आपको माला भी दिखा रही है। तो जब आप माला में या किसी प्रार्थना में या किसी भी पद्धति में जाते हैं तो उसका इस तरह से प्रकाश होता है। I'll take only 2 minutes to conclude because there are some slides which are just pictorial to be shown to you. या तो मंत्र से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, या किसी चिन्ह से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं उसका दर्शन करके, या किसी यंत्र की दर्शन या उसकी आराधना करके आप प्राप्ति कर सकते हैं, या आप रामायण के कुछ प्रारंभिक पंक्तियों को पढ़कर भी पूरी प्राप्तियां कर सकते हैं, क्योंकि वर्णानाम अर्थ संघानाम से लेकर भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति तक गणेश, शिव, गुरु, हनुमान, सीता, विष्णु और ऋषि की ही आराधना नहीं है। ये हमारे क्रोमेटिन नेटवर्क के जो विभिन्न अवयव हैं उनको व्यवस्थित करने, खोलने और श्रेष्ठतम प्रकाशित करने के लिए हमको एक अवसर प्रदान करते हैं। तो यदि हम इनको ही भाव से पढ़ेंगे तो हमारे सभी न्यूक्लियोटाइड उनके सीक्वेंस सही आ जाएंगे, हमारा जो गुथा बंधा हुआ है, जो एक्सप्रेस नहीं है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, और सभी जगह जहां मैथिलेशन है वहां एसिटाइलेशन हो जाएगा, और पैराजेनेटिक्स
प्रवृत्ति हो जाएगी, जिससे कि नरेंद्र जिस तरह से विवेकानंद बने थे उस तरह से सभी कोई वैसा हो सकेंगे। इन्हीं सब बातों को इन विभिन्न स्लाइड्स में दर्शित किया गया है कि कैसे कोई ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति करता है और ईश्वरीय स्तर पर पहुंच जाता है, और कैसे एसिटाइलेशन हमारे यहाँ के प्रोटीन का होता है, जिसको हम विस्तृत कभी चर्चा कर सकेंगे। हेट्रोक्रोमेटिन एक्सप्रेशन जब होता है तो फिर कालिदास बन जाते हैं, एक महाकवि कालिदास। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। This was excellent paper on scientific, para-scientific study. I would like Dr. Swaraj Nayak to speak on Ramayana, the role model of medical ethics. She is gynecologist in Jabalpur, and she will be speaking. Now, coming speakers, I would like that they should stick to time. Otherwise, we will have to skip lunch. Can you just come and start it? Is it okay? यहाँ पे उपस्थित सभी सभा में प्रबुद्धजन, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ थर्ड वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के आयोजकों को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे बात करने का। फ्रेंड्स, जैसे डॉक्टर गुमाश्ता ने बोला, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। मैं एक हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ और मेरे पहले स्पीकर वो भी डॉक्टर थे और यहाँ पे उपस्थित बहुत से डॉक्टर लोग बैठे हैं। ये मेरी बात से सहमत हैं कि आज करंट मेडिकल सिनेरियो में जो पेशेंट और डॉक्टर का एक रिलेशन होता है उसमें बहुत कड़वाहट आती जा रही है, उसमें बहुत तनाव बढ़ता जा रहा है। तो शायद ये हमारे लिए एक चिंतन का विषय है कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मविश्लेषण करें कि हम किस तरीके से इस मधुर संबंध को पुनः स्थापित कर सकें, किस तरीके से आने वाली जनरेशन के लिए ये आसान हो जाए कि फिर से एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन अच्छा बन सके। इसी मेरा टॉपिक इसीलिए थोड़ा सा भिन्न है और मैं इस बात को यही बताना चाहती हूँ। जब हम लोग मेडिकल एग्ज़ामिनेशन पास करते हैं तो हम एक ओथ लेते हैं, ओथ ऑफ हिपोक्रेटिक, जो कि हमें बताता है मेडिकल एथिक्स के बारे में और उसका अपने जीवन में उसका पालन करने का। पर फ्रेंड्स, सबसे पहला लेसन मेडिकल एथिक्स का हमको अपनी रामायण में देखने को मिलता है। जबकि शायद ये हिपोक्रेट पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय से मेडिकल एथिक्स का प्रचलन शुरू हुआ है। और शायद रामायण जैसी ऐसी कोई ग्रंथ नहीं है जो कि बहुत ही सरल भाषा में हमको अपने सिद्धांतों का, एथिक्स का और मर्यादाओं के बारे में ज्ञान देता है। ये दोहा मैंने लंका कांड रामचरितमानस से लिया है,
जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जौ प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नास, which means that if a physician or a treating doctor, minister and teacher, they cringe out of greed, fear or displeasure in place of right, then gradually the health system, the kingdom and society get ruined. Hence, these three important pillars of the society, they should remain neutral, just, and perform their duties without any pressure from the ruling government. आप मुझसे सहमत होंगे कि इस दोहे का एक एक शब्द एक आइडियल हेल्थ सिस्टम, आइडियल जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है। रामचरितमानस में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो हमें अपनी मर्यादा के बारे में बताते हैं। मेरा जो प्रेजेंटेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंस जब प्रभु राम का युद्ध महाबलशाली पराक्रमी लंकापति रावण के साथ लंका में होता है। इस युद्ध में लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं, उनको शक्ति लग जाती है मेघनाथ द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ने से। और जैसे कि हमारी मेडिकल फील्ड में हम देखते हैं कि जब कभी कोई पेशेंट सीरियस होता है या ज़ख्मी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो उसको हम लोग वार्ड से एक इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि उसका बेहतर अच्छा इलाज हो सके। इसी प्रकार लक्ष्मण जी को भी युद्ध के मैदान से हटाकर आईसीयू यानी कि एक सही जगह पे जहाँ पे उनका उपचार हो सके उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। इस प्रकार वैसे हम देखते हैं कि भगवान राम और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को वैसे कोई मार नहीं सकता, पर क्योंकि वो एक मानव लीला कर रहे थे, एक आम आदमी की व्यथा को वो दर्शा रहे थे, इसलिए और उनकी फ़ौज में ऐसे ज़रूर बहुत ज्ञानी लोग होंगे जो कि लक्ष्मण जी का उपचार कर सकते थे, पर प्रभु राम ने अपने विभीषण जी की सलाह मान के सुषैन वैद्य को बुलवाया। अब सुषैन वैद्य कौन थे? वो लंका के राजवैद्य थे, पर उन्होंने वहाँ आके लक्ष्मण जी का उपचार करना स्वीकार किया। इससे बड़ा मेडिकल एथिक्स क्या हो सकता है कि एक दुश्मन के सिपाही को भी उन्होंने इलाज करने के लिए हाँ कहा। Such an event was only possible because of the strong and unshakable belief that both the opposing armies had in the strength of character of the physician. Tulsidas ji कहते हैं that both healer and the patient, they should work in unison towards the common goal of successfully fighting the ailment of a patient. पर उसके लिए ज़रूरी है कि there should be an unquestioned faith in the ability and intentions of the treating physician. लक्ष्मण जी का जब एग्ज़ामिन करते हैं सुषैन वैद्य तो उन्होंने संजीवनी बूटी लाने का आग्रह किया। अब संजीवनी बूटी लंका के युद्ध मैदान में तो उपलब्ध नहीं थी, उसको हिमालय पर्वत से लाया जाना था और इसके बिना उनके प्राणों के बचने की संभावना नहीं थी। दैट मीन्स द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सुषैन वैद्य इट रिमेन अनचैलेंज्ड। संजीवनी बूटी चाहिए थी तो वो चाहिए थी। अब उसके लिए हनुमान जी को चुना गया because he had special abilities and superpowers, because and there was also a time limit कि संजीवनी बूटी सूर्य उदय होने से पहले पहुंच जानी चाहिए। जब कोई पेशेंट सीरियस होता है तो ही गोज इन 2 phases। फर्स्ट इज रिवर्सिबल फेज, इस फेज़ में उसके ऑर्गन्स बराबर काम करते रहते हैं और अगर इस समय उसको सही चिकित्सा सही इलाज मिल जाता है तो उसके प्राणों को बचाया जा सकता है। बट इफ़ दिस फेज इज़ क्रॉस्ड, पेशेंट गोज़ इन इरिवर्सिबल शॉक, उसके ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। अगर अब चिकित्सा दी जाती है तो बहुत बार हम उसे बचा नहीं पाते हैं। सो दिस रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, द गोल्डन आवर फॉर ट्रीटिंग एन इमरजेंसी फॉर एनी पेशेंट। हनुमान जी आगे बढ़ते हिमालय की तरफ तो उन्हें काल नेमी राक्षस द्वारा रोका जाता है जो कि रावण का राक्षस था, सिपाही था। ऐसे बहुत से काल नेमी हमारे फील्ड में भी अचानक आ जाते हैं जब हम किसी भी मरीज़ को कुछ ऑपरेशन या किसी ट्रीटमेंट प्लान की सलाह दी जाती है।
तो बहुत से लोग उनको डिस्करेज कहते हैं, अरे भाई वहाँ क्यों ऑपरेशन करा रहे, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये मरीज़ तो ऐसे ही ठीक हो जाता, हमारे फलाने ने ये ऑपरेशन किया तो वो तो ख़त्म हो गया था, इसलिए आप तो डॉक्टर दूसरा चुनो। और इस तरीके से बहुत सी सलाह दी जाती हैं जो कि कभी कभी मरीज़ के लिए उसके लिए हानिकारक हो जाती हैं, क्योंकि हम समय नष्ट कर देते हैं डिसीजन लेने में। हनुमान जी भी इसी तरीके से ऑब्स्टिकल्स पार करके पहुंचते हैं हिमालय पे, पर जब उन्हें वहाँ पे संजीवनी बूटी की समझ नहीं आती कि कौन सा है, तो वो टाइम नष्ट ना करते हुए वो डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना मैं पूरे पहाड़ को ही लेके चलता हूँ, जिससे सुषैण वैद्य जो है वो उसको उसमें से संजीवनी चुन सकें और लक्ष्मण जी का इलाज संभव हो। So this clearly emphasizes that it should be the jurisdiction of a doctor or a specialist only to choose the appropriate medicine available at the counter. पर हम क्या देखते हैं, हमारे देश में केमिस्ट की दुकान पे सारी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं और वो भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के। हम कोई भी दवा ले सकते हैं, चाहे हमें उसका एक्शन, उसका साइड इफ़ेक्ट्स या उसका कुछ दुष्परिणाम हमें पता हो ना पता हो, पर वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। सो ऑफ द काउंटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन बाय अ लेमैन, इट शुड बी स्ट्रांगली डिस्करेज्ड एंड कंडेम्ड। देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरी लीना, गही गिरी निशि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। हनुमान जी बड़ा सा पहाड़ लेके जब जा रहे थे तो वो अवधपुरी के ऊपर से गुजरते हैं और भरत जी उन्हें देखते हैं और वो समझते हैं शायद कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से जा रहा है, और वो एक झट तीर मार के उन्हें गिरा देते हैं, जिससे कि हनुमान जी कुछ समय के लिए बेसुध हो जाते हैं। अब देखिए, हनुमान जी को भी भरत जी को कन्विंस करना पड़ता है कि वो तो राम सेवक हैं और राम जी के कार्य के लिए ही वो पहाड़ लेके जा रहे हैं। जब भरत जी कन्विंस हो जाते हैं, उसके बाद ही हनुमान जी को आगे जाने की अनुमति मिलती है। सिमिलरली फैमिली मेम्बर्स एंड क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं पेशेंट के, उनको भी हमें तरह तरह से समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, उनके एप्रीहेंशंस को दूर करना पड़ता है, और जब वो कन्विंस होते हैं तभी आगे इलाज या ऑपरेशन की अनुमति हमें मिल पाती है, जो कि कई बार डिले होने का कारण हो जाती है। इस प्रकार हमारी तरह हनुमान जी भी बहुत से ऑब्स्टिकल पार करते हुए संजीवनी का वो पहाड़ लेके पूरा लंका पहुंचते हैं। सुषैण वैद्य उसमें से संजीवनी से लक्ष्मण जी का उपचार करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और प्रभु राम बहुत खुश होते हैं। और पर देखिए, वो फुल डिग्निटी और रिगार्ड्स के साथ उन्होंने सुषैण वैद्य को लंका वापस भिजवाया गया। रावण को इन सब इंसिडेंट्स का ज़रूर ज्ञान था। वो चाहता तो सुषैण जी का वध कर सकता था, उन्हें दंडित कर सकता था बिकॉज ऑफ हिज एक्शन ऑफ ट्रीटिंग अ एनिमी सोल्जर, बट प्रिवेलिंग द मेडिकल एथिक्स एट दैट टाइम, ही नेवर क्वेश्चन सुषैण, एंड सुषैण जी ने भी अपना फ़र्ज़ पूरा किया एक जीवन बचाने के लिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो किसी दुश्मन के फौज का या आर्मी के सिपाही को ठीक कर रहे हैं। This episode of Ramcharitmanas is an exemplary tale highlighting the respect and trust that a physician of those time commanded. Tulsidas ji, he highlighted the just and respectful environment for the physician in the society at that time, so that the health personals could execute their duties without any fear or prejudice. For a doctor, friends, a patient remains a patient first, irrespective of the gender, caste, creed, religion, as well as social and political status. Tulsidas ji advised physicians also to remain true to their duties. What we observed is that in those days, a physician was safe, even in the kingdom of an autocratic ruler such as Ravan. But do you think the same situation is true in the present medical scenario? Currently, the healthcare system in India is facing a very difficult time, despite the improvements brought about in mobilizing resources and distribution, as well as the strict implementation of laws and orders.
और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो देखने को मिलता है, ये जो एक नाजुक ट्रस्ट, एक प्यारा सा ट्रस्ट डॉक्टर और पेशेंट के बीच में था, उसका बिखरने का। इस ट्रस्ट के टूटने से क्या होता है, जब रिलेटिव्स जो होते हैं उनका गुस्सा डॉक्टर पे फूटता है, उन आक्रोश होता है, डॉक्टर्स पे असॉल्ट होते हैं, अस्पतालों में तोड़फोड़ की जाती है, और इसकी प्रतिक्रिया में डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, जिससे कि जनसाधारण को भी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। और इससे और ज़्यादा जो कंसर्न है वो है कि बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो दूसरे देशों में माइग्रेट हो जाते हैं, जो कि हमारे अपने देश के लिए एक वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकते हैं। Friends, I think this is the time and need of the hour to do self introspection, और जब शायद हम अपने को इम्प्रूव कर सकें तो शायद ये समाज में भी ये मैसेज जाएगा और धीरे धीरे इस रिश्ते में बदलाव आ सकेगा। और रामचरितमानस से हमने ये सीखा, ये देखा, चाहे कोई भी एरा हो, कोई भी युग हो, कोई भी टाइम हो, कोई भी जोग्राफिकल सेटिंग हो या लोग हो, जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, जो कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और रिएक्शन टू जो वेरियस सिचुएशंस होती हैं, वो हर एरा में एक जैसी होती हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में प्रॉब्लम्स पहले भी थी, आज भी हैं, चाहे वो राम राज्य था, चाहे वो आज का समय है, पर रामायण के कारण, रामायण के एथिक्स के कारण वी वर सक्सेसफुल इन मोबिलाइजिंग आवर इनर स्ट्रेंथ टू ओवरकम दीज इश्यूज़। तो आज समय है कि हम रामायण को सिर्फ पढ़ें नहीं, सिर्फ सुने नहीं, उसको आत्मसात भी करें। और इसके कारण ये ज़रूरी है कि समाज में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि राम कृपा नासई सब रोगा, राम कृपा नासई सब रोगा, जो अहि भांति बने संजोगा, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम ये न विषय के आसा। ये दोहा मैंने उत्तरकांड से लिया है, रामचरितमानस से, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स कैन बी इरेडिकेटेड बाय लॉर्ड राम्स ग्रेस इफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंबाइन। फर्स्ट, द फेथ इन द वर्ड्स ऑफ फिजिशियन in form of a true perceptor, and second, self-restraint towards sensual pleasures. जय श्री राम। अंत में एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि this presentation of mine is my own perception, my own thoughts and feelings. If I have hurt somebody, I apologize for that. Thank you so much. I'll ask our organizing chairman, Shri Ajay Vishnoi ji and Bhabhi ji, Alka Vishnoi ji, to come on the dais to felicitate. And one more thing, all the three guests will also release Saral Jain Ramayana. That is there. So this was a parascientific approach to Ramayana. Pen. This was a parascientific approach to Ramayana, a plenary session on it. Professor S.P. Gautam, Dr. Raghavendra Gumashta and Dr. Swaraj Naik. So this book Mr. Alka Vishnoi felicitating Dr. Swaraj Naik. One book will be released here, Saral Jain Ramayana. Bring the book, please. Saral Jain Ramayana was written in 1960 by Kastur Chand Naik ji, 1950. And now it is republished. There will be a release of book.
there will be release of a book. We know. No? Saral Jain Ramayana. I will request Dr. Danny Naik to kindly come here on the stage. ये जो किताब का आज विमोचन हो रहा है सरल जैन रामायण, ये डॉक्टर डैनी नायक के ग्रैंडफादर, उन्होंने 1950 में 5 साल के अथक परिश्रम के बाद बुंदेली भाषा में लिखी थी। ये विश्व भर में पहली रामायण है बुंदेली भाषा में। इसके बाद कोई भी बुंदेली भाषा में रामायण अभी तक नहीं बनी है। और जब हमने इसको अपने घर में पाया और देखा कि ये तो विलुप्त हो रही है, इसकी कॉपीज़ भी बड़ी मुश्किल से हमें मिली, तो हमारा ये था कि ये सिर्फ जैन समुदाय तक ना रहे, क्योंकि इसमें रामायण जुड़ी है, तो ये फिर से पुनः इसको हम प्रकाशन करें ताकि ये विश्व में इस अपने जगह बना सके। और उनको ब्रह्मचारी कस्तूरचंद नायक जी, जो कि मेरे बाबा ससुर थे, उनको हम एक ट्रिब्यूट दे सकें अपने परिवार की तरफ से कि ये किताब को हम पुनः प्रकाशित कर सकें। ज्ञानेश्वरी दीदी प्लीज ऑन द डायस। इसका जो कवर पेज है वो डॉक्टर स्वराज नायक ने बनाया है, और इसका जो इनर कंटेंट है वो स्वराज नायक के ग्रैंड ससुर साहब ने, दादा ससुर बोलते हैं जी। श्री कस्तूरचंद नायक जी ने इस पुस्तक को, इसको बड़े परिश्रम के साथ और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लिखा था। इसीलिए ये जबलपुर में ये वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस होती है कि जाबाली से लेकर कस्तूरचंद नायक जी तक अथक परिश्रम और अथक श्रद्धा के साथ रामायण को बाँचा सुना जाता रहा है। Over to Dr. Raghavendra Gumashta. Next session. We'll hurriedly start the next session. Prime session 3. We have already had 2 prime sessions. Now in this prime session, Shri Manoj Srivastava from Bhopal will speak on Jo Ragveer Hoti Sudipai Karte Nahi Vilamb Raghurai. I'll ask Shri Manoj Srivastava ji to please come on the dais, come on the stage. Professor Jeffrey Armstrong, his book will be released. In 10 minutes we will finish this book release, and Dr. Nilesh Oak from USA, from Jeffrey Armstrong from Canada, Shri Manoj Srivastava ji from Bhopal, and Dr. Jitendra Jamdar ji will chair the function and sum up the whole session.
जेफरी आ जाएंगे। Jeffrey, you are requested to go on the dais, please. Please go on the dais, please. The book will be released, but then before book release, we would like Shri Manoj Srivastava ji to speak on his topic, Jo Raghveer Hoti Sudipai, Karte Nahi Vilamba Raghurai. Shri Manoj Srivastava ji. आदरणीय मंच, उपस्थित साथियों, अभी 11 दिसंबर को जब मैं ओशो पर एक कार्यक्रम में यहाँ जबलपुर में आया था बोलने, तो अखिलेश गुमास्ता जी ने मुझे आदेशित किया था कि इस रामायण कॉन्फ्रेंस में मुझे इस पंक्ति पर बोलना है, जो रघुबीर होती सुध पाई, करते नहीं विलंब रगराई। मैं समझ गया था कि उनका इसी पंक्ति को चुनने के पीछे क्या आशय है। ये हमेशा मेरे साथ ये करते हैं, एक पंक्ति दे देते हैं। पहली जो रामायण कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने मुझे दिया था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस बार इन्होंने ये पंक्ति दी है और उनका आशय शायद ये रहा होगा कि ये वो पंक्ति है जो ईश्वर के ओमनीसाइंस और ओमनीपोटेंस के सिद्धांतों से टक्कर लेती है। हालांकि इस पंक्ति के कुछ और भी दिलचस्प पहलू हैं और मैं उनकी चर्चा करूंगा। ये पंक्ति उन लोगों को बड़ी अटपटी लगती है जो ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मानते और कहते आए हैं, ऑलमाइटी और पैंसोफिकल बताते आए हैं। और यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि यदि रघुबीर को पता होता तो रघुनायक कतई देर नहीं करते। क्या मतलब है इसका? क्या राम को सब पूर्व से ही नहीं पता है? राम तो ईश्वर हैं, उनके लिए तो विश्व के सारे रहस्य हस्तामलक व्रत हैं, हाथ पर रखे हुए आंवले जैसे। पर तुलसी की शैली बहुत गहरी है। वे आपको याद दिलाते हैं और बार बार याद दिलाते हैं। किस चीज़ की? इस पंक्ति को फिर से गुनिए, जो रघुबीर होते सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। इस कथन में 2 बार रघु रेफरेंस हैं। तुलसी ये कहना चाह रहे हैं कि राम को उनके ऐश्वर्य में नहीं, उनके वंश के सदस्य के रूप में देखें। मुझे डी क्यूपिड की जो 2 पुस्तकें, उनका शीर्षक याद आता है। एक पुस्तक का शीर्षक है टेकिंग लीव ऑफ गॉड और दूसरी पुस्तक का शीर्षक है ओनली ह्यूमन। ये अलग बात है कि ये जो वंश के सदस्य के रूप में उनको देखने की बात है, ये वंश असाधारण वंश है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु शब्द का उपयोग कर्मनिष्ठा, कर्तव्य परायणता की प्रतीक परंपरा के रूप में है। रघु शब्द का उपयोग जो है साहस की एक धारावाहिकता के लिए है। ये वो डायनेस्टी है जिसने हर वक्त, हर दौर में कर्तव्य के लिए उद्यत और सन्नद्ध रहने का परिचय दिया है और बार बार दिया है। ये रघुवंश की आत्यंतिक पहचान है, एक ऐसा व्रत जो उन्होंने लिया हुआ है। और तुलसी यहाँ इक्ष्वाकु वंश भी नहीं कहते हैं, तुलसी यहाँ सूर्यवंश भी नहीं कहते हैं, और वो रघु के संदर्भ से राम का नाम लेते हैं। रघु राम के ग्रेट ग्रैंडफादर, और उनकी पहचान दूरस्थ क्षेत्रों तक में उनकी पहुंच से थी। रघु ट्रांसाक्सियाना तक पहुंचे, ऑक्सस नदी तक पहुंचे, मध्य एशिया तक। और कालिदास का रघुवंश जो है वो रघु की वही अमर स्मृति है। राम भी जो है देश की सीमा पार करके दूरवर्ती लंका तक पहुंचते हैं। रघु का संस्कृत में शब्दार्थ है तीव्र। जब उसका शब्दार्थ ही तीव्र है तो विलंब जो है रघुराई से कैसे संभव होता? तो राम वही हैं जो पता लगते ही कहेंगे, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहो आय से दीजिए। वो बहुत द्रुत गति से ये काम करेंगे क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं
एक बार कैसहु सुधि जानहु, कालहु जीति निमिक महु आनहु। कि क्षण मात्र में, एक बार यदि मुझे पता लग जाए तो मैं क्षण मात्र में काल को भी जीत कर आ सकता हूँ। वो व्यर्थ समय गंवाने वालों में नहीं है। सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोले प्रभु अस कहो, अब विलंब के ही काम, करहु सेतु उतरहु कटकु। ये सोरठा जो है ये भी उनके उसी बात का परिचायक है कि विलंब जो है उनको प्रिय नहीं है। और ये ध्यान देने की बात है कि राम सूर्यवंश के 67वें राजा थे, रघु 64वें। इसी वंश में दिलीप भी हुए, सगर भी हुए, भगीरथ भी हुए, हरिश्चंद्र भी हुए, लेकिन राम को ही रघुवंशी कहा गया इस प्रसंग में और रघु का ही स्मरण किया गया। क्यों? यानी कालिदास ने तो रघुवंश की कथा की शुरुआत जो है महाराज दिलीप से की है, और रघुवंश का कालिदास के अनुसार यह कुल व्रत था कि वो देवताओं की सहायता करे। रघुवंशियों का प्रारंभिक परिचय जो कालिदास ने दिया था वो ये था कि जिनके चरित्र जन्म से आरंभ करके अंत तक शुद्ध और पवित्र रहे हैं, जो किसी काम का जब बीड़ा उठाते थे तो उसको पूर्ण करके ही विराम लेते थे, जो समुद्र के ओर छोर फैली हुई धरती है उसके स्वामी थे, और जिनके रथ पृथ्वी से स्वर्ग तक सीधे आया जाया करते थे, जो याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार मुँह मांगा और मनचाहा दान की दिया करते थे और अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार ही दंड देते थे, जो रघुवंशी केवल त्याग के लिए, दान करने के लिए ही धन का संग्रह करते थे, जो केवल यश प्राप्ति के लिए ही अन्य देशों को जीतते थे, उन राज्यों को अपने वश में करके लूटपाट करने के लिए नहीं। ये वो रघुवंश है, अत्यंत गुणवान लोगों की परंपरा, अत्यंत गिफ्टेड लोगों की परंपरा, वही जिन्हें काल के पुरुष कहते हैं, मैन ऑफ द टाइम। ये ठीक है कि इतिहास के प्रवाह में आगे चलकर इस राज परंपरा का भी क्षय हुआ। फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने की आनुवंशिक प्रतिभा पर काफ़ी रेडिकल किस्म का काम किया है, उनको यदि इस रघुवंश का पता होता तो क्या बात होती। राम की आनुवंशिकी ही कुछ ऐसी है। अभी थोड़ी देर पहले उसकी चर्चा चल रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि क्या किन्हीं जीन्स पर एक विशिष्ट फेनोटाइप को कैनलाइज करने का दायित्व रहता है। राम की आनुवंशिकी ही कुछ ऐसी है कि वो जिस काम का बीड़ा उठाते हैं उससे पूरा करके ही विराम लेते हैं। बार बार ये शब्द कह के तुलसी कहीं ये संकेत कर रहे हैं कि राम अवतार भले ही हों, लेकिन हैं वे एक आनुवंशिकी का चरम। उनमें हरिश्चंद्र की तरह सत्य के प्रति आग्रह है, और उसी के चलते वे भी उन्हीं की तरह तमाम दुख सहते हैं। वे भी राज्य से हाथ धो बैठते हैं, उनका भी माँ से वियोग हो जाता है, उनके पिता भी गोलोकवासी हो जाते हैं, उनको अपनी पत्नी से बिछड़ना पड़ता है। लेकिन राम हरिश्चंद्र की तरह सत्य के पथ से टस से मस नहीं होते। अपने एक पूर्वज दिलीप की तरह उनमें भी गौ के लिए प्रेम है, विप्रधेनु हित उन्होंने भी अवतार लिया है। भगीरथ की तरह उनमें भी लगातार अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहने की विलक्षण क्षमता है। यानी अवतार आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता है, वह भी किसी वंशानुगम की पराकाष्ठा होता है। अवतार जितना आविर्भाव है उतना ही आनुवंशिकी भी है, एक तरह की इमर्जेनेसिस जिससे जीनियस जन्म लेती है। पश्चिम में एक बड़ा शास्त्रार्थ इस बात पे चलता है कि क्या जीसस का जन्म जोसेफ और मैरी के डीएनए से हुआ, और एक दावा ये आता है कि गॉड चोज टू इम्प्लांट इन मैरीज वर्जिन ओवम अ वाई क्रोमोसोम which he created at conception all by himself. In so doing, God the Father bypassed whatever defective genetic weaknesses would have been passed on through the Adamic or male hereditary genes. लेकिन हमारे यहाँ मनुष्य पर यह अविश्वास नहीं है कि वह अवतार को जन्म नहीं दे सकता। जीसस के जरिए मनुष्य संपूर्ण होता है। ये कहा गया कि you are complete in him which is the head of all principality and power। लेकिन रामचरित्र, कहें कि कृष्ण चरित्र, कहें कि भारतीय अवतारों के चरित्र कुछ ऐसे हैं कि वे मनुष्य के जरिए संभव होते हैं। वसुदेव और देवकी, दशरथ और कौशल्या के माध्यम से संभव होते हैं। उनमें वंश की एक सरणी भी है, और उनमें इस आधार पर संदेह नहीं है कि एक मनुष्य के क्रोमोसोम से ईश्वर कैसे आकार ले सकता है। कथा तो यह है कि कई बार ईश्वर भी किसी पूर्व जन्म में ये वचन दे देता है कि मैं उस युग या उस वंश में उसके गर्भ में अवतीर्ण होऊंगा। भगवान को इसमें अपनी हेठी नहीं लगती कि वह मनुष्य के गुण सूत्र में प्रविष्ट हुआ।
वह कुछ बाईपास नहीं करता। हमें भले ही लगती हो, ईश्वर को नहीं लगती। जो ईश्वर खंबे से प्रकट हो सकता है वह स्त्री गर्भ से क्यों नहीं हो सकता, और क्यों नहीं उस वंश की छाप धारण कर सकता। हमें लगता है कि जो जन्म जन्मांतर के चक्र से हमें मुक्ति दिलाता है, क्या वह स्वयं जन्म धारण करेगा? लेकिन जिंदगी की खूबसूरती इन्हीं विरोधाभासों में है। सूरदास ने अपने एक पद में कहा था, भक्त हेत देह धरन, पुहमी को भार हरन, जन्म जन्म मुक्तावन। ये कहा उन्होंने, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुख ने जसमती के कारण देह धरावन, कि सुखमयी यशोदा के लिए आपने यह देह धारण की है। ईश्वर को भी मातृत्व का स्नेहाशीर्वाद चाहिए, ईश्वर को भी पिता के प्रेम में सरसित होना चाहता है। ईश्वर शायद उन सब गुणों का उत्कर्ष है जो एक सात्विक वंश में होते हैं। बाल कवि बैरागी में जब कलेक्टर मंदसौर था तो वो मेरे अच्छे परिचित थे, उन्होंने एक कविता मुझे सुनाई थी और वो कविता गन्ने पर थी। यूं थी, इक्ष्वाकु वंश के आदि पुरुष गन्ने मेरे भाई, इक्ष्वाकु वंश के आदि पुरुष गन्ने मेरे भाई, रेशे रेशे में रस और रंग रंग में मिठाई का जस, रखोगे तो प्यारे भाई गन्ने, इक्ष्वाकु वंश के आदर्श, तुम्हारा वही हश्र होगा जो होता आया है। पोरी पोरी काटेंगे लोग, तुम्हें चूस चूस कर खाएंगे, आखिरी बूंद तक निचोड़ेंगे। अपने जन्म से मृत्यु तक तुम्हें यही सब करना होगा। अस्मिता तुम्हारी मिठास जीवित रहे, इसलिए रग रग रेशा रेशा रंध्र रंध्र तुम्हें मरना होगा। रस और जस के साथ जीना बहुत मुश्किल है। ये कविता थी उनकी, और मुझे लगा कि रघुवंश के या इक्ष्वाकु वंश के इक्ष्वाकु वंश के राम ने इन मुश्किलों से कभी पलायन नहीं किया। वे अपनी पूरी जिंदगी जला गए। इस सृष्टि में मर्यादा और आदर्श स्थापित करने के उपक्रम में वे आखिरी बूंद तक भी निचुड़ गए, लेकिन उनका रस और उनका यश आज तक भी कायम है। अतीत मानवों के हृदय में उनकी स्मृति ने माधुर्य का संचार किया है। राम वे हैं जो वंश के विशेषाधिकारों पर मौज नहीं उड़ाते, लेकिन वंश के विशेष दायित्वों के प्रति उनका समर्पण, उनकी सजगता देखते ही बनती है। रघु का वंश रोशनी का वंश है। सत्य दीर्घ परंपरा को एक न एक दिन अपने शिखर पर पहुंचना था, तो राम संभव हुए। सीता में भी अपने पति के इस वंश के प्रति भारी आदर का भाव है, जिसका उल्लेख रावण को जवाब देते हुए वो करती हैं। और जो है स्वयं हनुमान जो हैं वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में राम को ये बताते हैं कि मैंने धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार सीता जी के हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। तो ये बात है। अवतारों का अति मानवीय प्राकट्य अपने आप में दिलचस्प सैद्धांतिकी है, लेकिन उसके अपने अन्याय हैं। वो माँ की हैसियत घटाकर कई बार उसे इनक्यूबेटर में तब्दील कर देता है। इसलिए यदि इस पंक्ति में रघुवंशिकता का दावा है, आनुवंशिकता का दावा है, तो वह न तो ईश्वर को कमतर बनाने के लिए है और न वंश के आधार पर किसी अमानवीय विभेदाचार को जारी रखने के लिए, और न वंश के आधार पर किसी तरह के विशेषाधिकार को प्राप्त करने के लिए। पूरे रामचरितमानस में जब जब दुरूह और भीषण कर्तव्यों की बात आई है तो रघुकुल का संदर्भ आया है, लेकिन रघुवंश की सुविधा और सुयोग का भोग करने के क्षण राम बाहर निकलना पसंद करते हैं, महल से, राजधानी से। तब तो राम निकुल हैं। कबीर जो हैं इसीलिए उनको कहते हैं, कुल खोए कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया बिलाए। जिस राम के बारे में सीता को यह विश्वास है कि जीती को सके अजय रघुराई, उसी के बारे में हनुमान अब इस पंक्ति में ये कहते हैं कि करते नहीं विलंब रघुराई। और हनुमान और अन्य वानर भी जो है सुंदरकांड के 60वें सर्ग में राम के कुल की ही याद करके ये कहते हैं कि यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीतकर उनके पास ले भी चलें तो नृपशेष राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। दूसरा पहलू है यदि पता होता, कंडीशनल्स।
हम जिस ईश्वर को एब्सोल्यूट समझते हैं उसके संबंध में कंडीशनल्स की बात, उसके संबंध में काउंटर फैक्चुअल्स की बात यदि पता होता तब बात ही क्या थी। ऐसे कंडीशनल्स ही ये स्थापित करते हैं कि राम नर लीला कर रहे हैं, कि राम भी कुछ सीमाओं के भीतर ही संचालित हैं। एक शायरा का कहना था, दिल न मुझसे कभी खफा होता, दिल न मुझसे कभी खफा होता, उसका माना अगर कहा होता, अगर दिल न मुझसे कभी खफा होता, उसका माना अगर कहा होता, दर बदर यूं न घर से हम होते, मंजिलों का अगर पता होता। राम दर बदर घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें सीता का पता नहीं है। इस अगर या जो का उल्लेख ये बताता है कि राम भी जिंदगी की उन्हीं अनिश्चितताओं का शिकार हुए हैं जिससे कि आम आदमी, आम मनुष्य गुजरता है, और जिंदगी ने उन्हें अवतार होने के कारण किसी तरह के कंसेशंस नहीं दिए हैं। और फेवर्स की तो बात ही क्या है राम के बारे में। इसीलिए हनुमान जो हैं वो हेतु हेतु मद्भुत काल में बोलते हैं, पास्ट कंडीशनल में, कि राम को यदि पता होता तो परिणतियां प्रतीक्षा थोड़ी कर रही होती। इसलिए जो ये महत्वपूर्ण है समझना कि क्या राम के अवतार में मैट्रिक्स जैसा कुछ है। यदि आपने वो फिल्म देखी हो, क्या हम सब एक महाकाय कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं। स्मूथ जैसे वैज्ञानिक अभी कहते हैं कि परप्लेक्सिंग फीचर्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स आर जस्ट व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट इन अ सिमुलेशन। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अल्टीमेटली रियलिटी माइट बी नथिंग बट मैथमेटिक्स। तो आज कंप्यूटर एल्गोरिथम के युग में माया, नियति, वेदांत, कर्म जैसे भारतीय शब्द और अवधारणाएं नए तरह से जीवित हो गए। ईश्वर वह है जिसके लिए यह सब एक कार्मिक ट्रैप नहीं है बल्कि एक कार्मिक प्ले है। राम को उनके ईश्वरत्व का भान जब होता है, ब्रह्मा कराते हैं सीता के अग्नि प्रसंग में, तो वही ब्रह्मा कराते हैं जो इस सिमुलेशन के रचयिता हैं। और ये श्री हरि की ही चॉइस थी कि वो इस सिमुलेशन में उतरें, इस मैट्रिक्स में उतरें। राम के रूप में उनका अवतार हुआ। इस बात को न समझ पाने के कारण हमारे कुछ अमेरिकन स्कॉलर्स उन्हें द फॉरगेटफुल अवतार कहते हैं। भौतिकी के नियम, डीएनए में अंकित रचनाएं, क्या वो सब वही मैट्रिक्स तो नहीं है। वो जिसे हम नियति कहते हैं, क्या वो वही मैट्रिक्स तो नहीं है। रावण के वरों को यदि ध्यान दें, और वो ये भी ध्यान दें कि वो भी ब्रह्मा के ही दिए हुए हैं, वो एक खास किस्म की एल्गोरिदम तैयार करते हैं जिसमें उसकी अमरता का खंडन सिर्फ नर वानर से ही होना संभव है। तो जो वर हैं, वो जो वरदान हैं, वो एक तरह की पूर्व रचना है। नारद का शाप इसी तरह से एक दूसरी किस्म की एल्गोरिदम है। मनु और शत्रुपा का तप तीसरी किस्म की एल्गोरिदम है। क्या ये सब नियति की ही अलग अलग स्क्रिप्ट हैं जिनसे श्री हरि अपना कार्मिक प्ले तैयार करते हैं। क्या ये सब सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल हैं। क्या इन्हें ही पाशुपत दर्शन में कंचुक कहा गया है। क्या ये सब अवतार की बाउंड्री कंडीशंस हैं। जैसे मैट्रिक्स में नियो को यह दृष्टि भी प्राप्त होती है कि मैट्रिक्स के बाहर का यथार्थ संसार भी सिमुलेशन की एक और लेयर है, एक और परत। सो ऐसी बहुत सी परतों से मिलकर बनती है अवतार की पृष्ठभूमि। हम आपकी भी शायद ऐसी ही बनती हो, लेकिन जिस तरह से मैट्रिक्स में नियो को दवन की अंतर्हित शक्तियों का पता चलता है, वैसे ही अग्नि प्रसंग में देवताओं के स्मरण कराने पर, ब्रह्मा के स्मरण कराने पर राम को पता लगता है कि वे ही द वन है। रावण का तप उसको जो वर दिलवाता है, उससे भी उसकी ही नहीं, राम जैसे नर व हनुमानादि वानर की भी मैट्रिक्स तैयार होती है। कंडीशनल्स का होना हमें एब्सोल्यूट होने का विरोधी लगता है, लेकिन यदि ऐसा हमें लगता है तो हम शायद राम को एक तरह की सेल्फ एनक्लोज्ड यूनिट के रूप में देखना चाह रहे हैं, और वो वहीं गलत है, वहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है। राम तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संसार में, इसके पचड़ों में जब उतरे हैं, तो वो न केवल पृथ्वी पर उतरे हैं बल्कि देश और काल की सीमाओं में उतरे हैं।
वे समय के बदलावों के बीच में जीते हैं और हमसे अंतःक्रिया करते हैं। वह समय का समय है, सुप्रीम समय। लेकिन हमारा भगवान समयहीन नहीं है। वह यदि धरती पर अवतीर्ण होता है तो एक दिक और एक काल की सीमा में भी अवतीर्ण होता है, और उसी के अनुरूप वो योजनाएं भी बनाता है और अपनी सीमाएं भी रचता है, और उनके अनुसार जो है अपने आप को कंडक्ट भी करता है। शायद इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि जो मैट्रिक्स रची गई, क्योंकि जो सीमाएं जो हैं उन्होंने स्वयं के लिए चुनी, वो उनकी अपनी लिमिट नहीं थी, वो उसके साथ साथ जो है इस पृथ्वी पर जिस भूमिका को निभाने के लिए वे आए थे उसकी भी सीमाएं थीं। और जो हैं ये बात यूं भी समझना चाहिए हमें कि कविता जो है ज्ञान से नहीं अज्ञान से संभव होती है। रामायण या रामचरितमानस जो हैं अज्ञान के इसी मुकाम से कविता का सौंदर्य अर्जित करते हैं। बात राजनीति के रखने की उतनी नहीं है जितनी कि इस कविता के रखने की है। यानी जब वो अंगूठी वाला प्रसंग आता है ना, तो उसमें राम जो हैं सभी वानरों के बीच में से सिर्फ जो है हनुमान को अंगूठी देते हैं। क्या राम को मालूम था कि यही वो व्यक्ति है जो सीता का अंतिम रूप से पता लगा पाएगा? तो बात उस समय कहा भी है तुलसी ने कि यद्यपि राम जो हैं सुरत्राता राम जो हैं सब बातें जानते हैं, लेकिन राजनीति राखत सुरत्राता, ये बात कही थी उन्होंने। तो हनुमान को जब अंगूठी दी गई लाखों वानरों के बीच से, तो सिर्फ उन्हीं को तो वो ज्ञान जितना नहीं था, वो ज्ञान की ही बात नहीं थी, विश्वास की भी बात थी। वो जितना ज्ञान नहीं था उससे ज़्यादा विश्वास था। यह होता है कई बार कि हमें लगता है कि यह आदमी हमारा मददगार सिद्ध होगा और कर दिखाएगा वो काम, और वो कर भी दिखाता है। हमारा विश्वास उसमें फलीभूत हो जाता है। यह संयोग है या इसमें विश्वास की कोई रासायनिकी काम कर रही होती है? हनुमान की उस भीतरी और संभवनीय सामर्थ्य को, हनुमान की उस लेटेंट और पोटेंशियल सामर्थ्य को, जिसे खुद हनुमान भी नहीं जानते हैं, राम छीन लेते हैं। और वही तो तुलसी कह रहे हैं कि एक का जानना दूसरे का न जानना नहीं है, वह तो सब बातों का जानना है। और इसीलिए ये राम यदि जो हैं इस अवसर पर जो रघुवीर होती सुध पाई की बात है, तो उसमें जो है हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी ही एक प्रसंग तब आया था जब राम जो हैं स्वर्ण मृग को जो है पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे गए थे। कई लोग उसको भी उनका ज्ञान बताते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसी प्रसंग में राम एक अत्यंत रहस्यमय श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है, लक्ष्मण, अर्थी मनुष्य जिस अर्थ का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट होकर बिना विचारे ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर और अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। राम किस अर्थ की बात कर रहे हैं? राम किस प्रयोजन की बात कर रहे हैं? क्या वो ये तो संकेत नहीं कर रहे कि इस बार बिना विचारे चलने में ही उनके पृथ्वी पर आने का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? जैसे उस अविचार से अवतार का प्रयोजन सिद्ध हुआ, वैसे ही हो सकता है कि इस अज्ञान से राम का प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो। क्रिस्टोफर स्टर्म ने कहा है कि इफ वी आर इग्नोरेंट ऑफ आवर फ्यूचर इवेंट्स, we must not seek the cause of it merely in the nature of our souls, but also in the express and infinitely wise will of the Creator. राम वो हैं जो इस एक्सप्रेस और इन्फिनिटली वाइज विल को जानते हैं, और शायद वे इसी अर्थ के जानने की बात कर रहे हैं। वे जो जानते हैं वो सत्य है, और जिस चीज़ के लिए हनुमान को भेजा गया है वो तथ्य है। तथ्य संकलन के लिए हनुमान है, सत्य संकलन के लिए राम। प्रणाम। श्री मनोज श्रीवास्तव जी, आईएएस, आपने जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। अद्भुत व्याख्या, विस्तृत व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या, और अवतार का सृजन, अवतार का आगमन कैसे होता है उसकी भी व्याख्या की। आमंत्रित करूंगा
डॉक्टर नीलेश नीलकांत ओक को Before that, we'll have a book release written by Shri Jeffrey Armstrong. I would like the dais and साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी, अमृता दीदी, मैत्री दीदी, Professor Balram Singh ji, and Major General G.D. Bakshi to please come on the dais for the book release. And also our organizing president, Shri Ajay Vishnoi ji. The book is written by Dr. Jeffrey Armstrong from Vancouver, Geeta Come Alive. I will request our honorable guest, Culture Minister of Sri Lanka, Shri Vidura Vikram Naike, to please come on the dais, come on the stage and release the book. Just wait. The chief guest of the function is coming. Just wait. A photo shoot. One more book. एक बुक और दे इधर दे जी एक बुक और दे एक बुक इधर दे कहीं दिमाग रखते हो कहीं क्या तुम्हारा काम है मिल गया जी जी and also Rinku ji, our priya beloved person of whole the town. Lights इधर की भी on कर दो lights इधर की on yes please get up here please stand up here also there are books दीदी भाभी को दे दो हाँ अब photo session this side also यहाँ दिखा दे ऊपर चढ़ जाए this side also इधर मंच पे इधर और कोई दीदी को दे एक इधर दे ना इधर आप ऐसे आ जाएं क्लोजर बस अभी रुक जाए बस फोटो के लिए फोटो सेशन क्लोज अप प्लीज सर we are losing time. Shri Manoj Srivastava was very helpful, and I think he was the brainchild of the first World Ramayana Conference, and every minute he guided, every step he guided. Now, Shri Nilesh Neelkant Oak from USA. Dr. Nilesh Neelkant Oak will speak on magic and mystery of world geography of Ramayana times. रामायण के काल में विश्व की जो ज्योग्राफिक संरचना है उसका क्या जादू है. धन्यवाद.
Namaskar. I have a able help of Dr. Gumasta ji. There are two Dr. Gumasta jis, and both are extremely able and capable. So in fact, I didn't get a chance to talk to him before with Raghavendra ji. Otherwise, I would have asked him to summarize my talk first, and I would have just retranslated. He does such an effective job. Many of you may not know who might be translating. When a speaker speaks in Hindi, who translates. Can you hear me? No? All right. Okay. Just ignore what I said that you did not hear. Well, let me get into the subject. He was running. He was very scared. And even when he was exhausted, he was walking. He was going from one area to another. He was started with India. From India, he went to Thailand. We have people from Thailand. From Thailand, he went to Indonesia. From Indonesia, he was sometimes swimming, sometimes going by boat, sometimes flying. He went all the way to South America. And then another time, he was equally scared. He was going in the west direction, going up the mountains, down the mountains, up the valleys, through the desert, through Iran, through Iraq, through Turkey, through Syria, through Romania, through Italy, all the way to Alps. And he did the same thing in the north direction, and he did the same thing in the south direction. He was a very strong person. He was a very intelligent person. He was a very brave individual, and he was scared. He was scared of someone else who was more brave or braver, more intelligent, and that person was his elder brother Wali. Everyone knows why Sugriva was scared and running around the world. He was scared of Wali. Okay? Now, I just told you the boundaries that he traveled from Alps in the west to Andes in the east. That's South America. Think of, I forgot to mention one country. You would have said, that's nice. I said Romania, Italy. I should have said Switzerland. Yeah, right. Okay, that's the Alps. How do we get this information? We get this information from Maharishi Valmiki, describing this in Valmiki Ramayana. Somebody before me, I forgot who the speaker was, who mentioned, just like Mahabharata has many upakhyan, Valmiki ji also does the similar thing. Those upakhyans are smaller, but he will take a digression. And it's not just a careless digression. In fact, the best teachers are master digressors. Okay, he's taking that digression to convey a specific point. So what I'm saying is, Sugriva, and I don't want to do this in 20 minutes, I cannot do it. I want you to watch my talk in YouTube, just type Sugriva's Atlas in the Google or YouTube or anywhere. And the best time to listen to that is when you go to bedtime. Okay? Either way, you are a winner. When you start listening to it, either you will have a wonderful listening or you will fall asleep very fast. Either way, it's going to do a good job for you. But you may ask, so Sugriva knew from Alps to Andes, and he also describes the Arctic Sea to Antarctica, so what's the big deal? Like there is a Ramayana school going on in another room there, and the young kids, young students, if you go to their school and look at the library and simply pull any world map, the today's world map will tell you a lot more than even Sugriva knew. So what's the big deal? To understand the big deal, you need to know precisely for this reason 3 things: the time, place, and the context. When Sugriva knew this, the timing we are talking is 14,000 years ago. The place we are talking is from India, which is familiar to us, okay? And the context is, of course, the timing of Ramayana. So, Desha, Kala, and Patra. We know this through Valmiki Ramayana. About 4 years ago, I was at a conference in Oxford. And just after my presentation, a British professor, I don't know where he was from, he just came to me and he said, kind of riled up, bearded, and he said, but you know,
that India does not have history? And he was kind of like anticipating what kind of response he's going to get from me. He did not know that I worked in sales for a very long time. I said, yeah, that's actually true. Although that's not a correct answer, India does have a history. But I said, yeah, that's true. India doesn't have a history. We have itihasa. We have itihasa. Okay? So now we may ask, what is, I mean, the professor actually continued, by the way. So professor said, okay, I know the word itihasa. What does it mean? Now I said, it's my turn to ask you a question. I said, do you know that until about 200 years ago, like Darwin's time, as far as the West is concerned, for them history meant Bible. How many of you know that? Until about Darwin's times, 150 years or 200 years. So when I said that, he just nodded his head in disagreement. He said, well, there was a Herodotus who wrote the history of the world more than 2,500 years ago. And I said, that's true. That is actually true, but what's the next one? And so I want to, I mean, that communication with the professor continued, but I don't want to take you there. So what's the difference between the history and itihasa? Okay, both are useful. Both have similarities. In a simple way, in 1 word, 2 words, 4 words, 5 words, if I have to say it, I will say history, think of this as a his story. Okay? And I will leave for you to think what that his refer to. Okay? Just as a homework for all of you. Itihasa, everyone knows the meaning of it, Sanskrit. Iti, ha, asa. This is how it happened. Okay? Now, as I said, actually the history is useful. It has dates. It tells you who was ruling at certain time, who ruled after person A, who ruled after person B, and so on and so forth. It tells you who killed who plundered who. Okay, not necessarily always negative things. And history will also tell you some additional aspects, but mostly it is focused on the kama, the desires and the fulfillment of desires. Not to say the other aspects of Char Purushartha will not be touched, but just barely. Now let's contrast that with the itihasa. In the morning, those of you who were here and listened to Bala Sankuratri, by the way, the Sugriva's Atlas is the name of that talk that I have given in multiple places. Is Bala Sankuratri in the audience here? Yeah, if you can just stand there. So I gave the talk, but the title was created by Bala Sankuratri, okay, the Sugriva's Atlas, in that corner there. Okay, thank you, Bala. And so he quoted in the morning the shlok which says, Dharmartha kama mokshanam upadesham samanvitam purva vruttam kathayuktam itihasam prachakshate. So वो तो हम बोलना है तो हम बार बार बोल भी सकते हैं, but I want to give you something different. Okay, a different additional aspect of this itihasa, what itihasa is and why that becomes a Saumya Shakti. In fact, जो कॉन्फ्रेंस का जो थीम है कि रामायण की सौम्य शक्ति, Ramayana's soft power. I want to say that is very true. Ramayana is soft power, okay, through itihasa. So before I give you that, let me ask you, how many of you are doctors in the audience, including the podium here? Many doctors. How many of you are lawyers in the audience? Very good, all the way there. How many of you have done MBAs? Okay, good number of you. So all of you and many others are also familiar with what is a case study, correct? What is a case study? And what is given in the case study? A situation is given, usually, most of the time, based on the real life stuff. Now, in order that you study from it, you develop how to think properly. Not all the information is given. Would you agree? And then the questions are asked. For example, if it's a business case study, it will say, so now, does this CEO, Mr. X or Miss X, should that person buy that company? Or how much dollar value they should buy it for?
If it's a legal case, if it's a medical case, the questions would be related to that, and you are expected to write the response. Not all the answers are given. And therefore, you see that in our itihasa, whether you take Ramayana, whether you take Mahabharata. After 14,000 years ago, even now, if two Ramayana experts get together, or even non-experts, in no time we get into the fight. Okay? Was Rama's killing Wali was justified or not? Like yesterday, we were fighting until 1:30 at night in the lobby of the Ashoka Hotel. Or if you come to Mahabharata, when Draupadi Vastraharan was happening, why did Bhishma, who knows the dharma and everything, did not say a word or just said very little? What is the idea? If Vyasadeva or if Maharishi Valmiki wanted to give you the answer in a spoon-feeding fashion, he would have given it. They were great. They were kavis. Kavis not just in the sense of a poet, the way we understand. But that's why we fight everything. Arjuna killing Karna, and I can go on with the examples like that. Okay? Many. Sita's Agni Pariksha, Rama's killing Shudraka, and we just go on and on. Theses are written about it, papers are written about it. But the idea is that you remain engaged. Okay? And in the process, try to understand different points of view. Ultimately, we have to make some decision and move on with the life. Now, why is this possible? Is this just likes of Bhagwan Vyasa or Bhagwan Valmiki have done this to create a confusion among ourselves? No. That's the definition of itihasa. Dharmartha kama mokshanam upadesham samanvitam purva vruttam. So they are taking a historical event. Katha yuktam. Now, historical event for us. Keep in mind, Maharishi Valmiki was a contemporary of Ramayana times. That was the question in a Ramayana school quiz. Maharishi Vyasadeva was a contemporary of a Mahabharata times. So for them, it's present happening, first person account or a second person reliable accounts. That's how basically they wrote it. So essentially, it's created as a case study encyclopedia, whether it is Ramayana or Mahabharata. Now, some people may think maybe this is my interpretation. No, it's not my interpretation. After Mahabharata is written, right inside the Mahabharata, Adi Parva, you go, you will see the description. After Ganeshji and Vyasadeva, they have finished composing. Now, again, if I just mention Ganeshji, now some people will go on a tangent, so I just want to let you know. You can take it literally, you can take it figuratively, it doesn't matter. Mahabharata text is there, factually it's there in front of us. Do you know what is the verse that says, how it describes the Mahabharata Grantha? In case you're wondering, I'll come back to Ramayana in a minute. It says, Grantham Granthi Tada Chakre Munir Gudam Kutuhalat. This Grantha is full of curiosities, Kutuhalat. Munir Gudam, full of mysteries. Grantham Granthi, you know what that is? Grantha everyone knows, the book, but Granthi is like a twist. So it's full of curiosities, full of mysteries, full of twist. Isn't that how a case study looks like? Almost like an exam, it's given to you and now you have to figure it out exactly what happened, especially the business case studies. Now, if you come to Ramayana, and because, when I come to Jabalpur, I get to hear a lot of Valmiki Ramayana and also Ramacharita Tulsidas Ji's Ramayana. But I also know there is a significant Marathi population in Jabalpur, okay? And I thought I'll quote something, and you will also see the beauty of how India connects even through different languages. Although what I'm going to read is from Santa Eknath, his Bhavartha Ramayana. Everyone will understand. I'm so confident even before saying it. He says, what is the purpose of itihasa? Why he is writing Bhavartha Ramayana. He says, Jaisa bhava taisi priti, jaisi priti taisi prapti, jaisi prapti taisi sthiti, hachi paramarthi mukhyartha. Granthi rakhoniya guhyartha, मुख्यत्वे दावा वा परमार्थ हाची कवित्वाचा निजस्वार्थ येणे रघुनाथ संतुष्ट. And now I want to say that's why, like Ramayana and Mahabharata, they act as a encyclopedia of a case study.
Therefore, they feel as relevant to us today, as they were relevant thousands of years ago. If you start reading the story, and those of you, how many of you have not ever read Valmiki Ramayana? You can be very honest, okay? And please start reading. With translation is absolutely fine, okay? You will find, I'm saying in a bit humorous note, but it will also feel like a neighborhood gossip in a very positive sense. It's so much related to what you know, what's happening around you. It will not feel foreign at all. What is the beauty? Because everything is not answered. So even when we are trying to figure out what's happening there, we say, well, pata nahi, but maybe thinks that is it. That's how you will kind of find it. Even in the same book, about the same thing. Last time when I was here, 2020, I talked about Kumbhakarna and Klein-Levin syndrome, if some of you remember that. Okay, right in the Valmiki Ramayana, there are 3 different theories. Think of a case study, 3 different theories about the condition of Kumbhakarna and how it came out to be, right inside Valmiki Ramayana. And it has no problem. That's perfectly fine. You go to second doctor to get the doctor's opinion. Okay, it is something like this. Lastly, I want to make 3 more points. Ramayana itself is a Saumya Shakti because it is relevant now. It was relevant just after Ramayana times. It was relevant during the Mahabharata times. I think there was one of the talk which referred to reference to Ramayana in other times or other grantha, something like that. There was somebody's talk, or maybe it's still going to happen. How many of you know that the warriors of Mahabharata are extremely familiar, extremely fluent with Ramayana? How many of you know that? While they are fighting on the battlefield, they are quoting the verses of Valmiki Ramayana, either as is or in a modified form, but referring to this thing. The warriors are talking, referring to Ramayana verses or Ramayana instances. I'm not referring to the Ramopakhyan in Mahabharata, which is a separate standalone description. Right in the middle of the battle, they are discussing it. Okay? So it was relevant, Ramayana was very much relevant during the Mahabharata time itself, including the Mahabharata war. But quickly, let me get to the last 3 points. By themselves, they are a Saumya Shakti. And guess what? Those 3 that I'm going to mention now are required to create the Saumya Shaktis such as Ramayana or Mahabharata. Do you know what are they? Let me put the question in another format, then you might appreciate even more. To that professor at Oxford, I said, well, we may not have a history, but we have itihas. What creates itihas? What are the ingredients that you need for itihas? You need 3 ingredients. Okay, and I will not make my dear friend, where is Jeffrey? Oh, he's, sorry, right here. I'll not make him stand, he's right on the podium, that's perfect. Actually, for a long time, I used to tell what I used to tell, and but people are like confused. And I said, well, they're not intelligent enough. And Jeffrey said, no, Nilesh, the problem is with you. Okay, he said, you just go and tell people and they're not ready for it. You have to get them grounded. So that's what I'm going to tell right now. The 3 ingredients that are required to create a itihas, to compose a itihas are this. To tell something that happened thousands of years ago, you need a language. Now, of course, Valmiki is a contemporary of Ramayana times and Vyasadeva is a contemporary of a Mahabharata time. So that time they may have a language that everybody understands. But how to take that language and make people understand, especially the people of a Kali Yuga, all of us, thousands of years later. But when you read Valmiki's Ramayana, we understand it. Actually, I'm not Sanskrit trained at all, okay, none. But when I start reading Valmiki Ramayana, first reading, I get 60, 70%, 40% just before even looking at the translation. So you need a language that has low to no drift, a language that is extremely capable of describing the events in a succinct manner, but also in a manner that kind of stays stable through the time. That language is Sanskrit. So the question I wanted to pose, I didn't ask that professor, by the way. I said, it's not only that we have a itihasa,
But the question really everyone needs to understand and appreciate, why only India has itihasa? Are you following? Why only India has a itihasa? And this is not to just get you the raw feeling giving a lecture in India. I do the same thing when I give the lectures anywhere in the world. Why only India has a itihasa? Because one of the thing is an extremely stable, sophisticated language which has a low to no drift through time, through thousands of years. Okay, that is what is happening or what was happening. The second one, we need to know when is it happening. Because look, I said Sugriva's atlas is a big deal. I mean, you say, what's the big deal? In fact, Sugriva doesn't know or doesn't mention anything about the Atlantic Ocean. Now, he wouldn't use the word Atlantic, that's fine, but even that area. And you say, come on, so what's the big deal? Like the students upstairs there know a lot more than Sugriva. To understand that, we need to know the context of a time. Because Sugriva knew this 14,000 years ago. Okay, Western Europe did not know about Antarctica until less than 300 years ago. Or India, or America, and so on and so forth. Okay, so that's the context. The second one is we need to know when something happened, whether Mahabharata, Ramayana, whatever the instance is, because it is in the context. If I tell you Shivaji Maharaj flew from Raigad to Jabalpur in 2 hours, you would laugh at it, laugh at me. Just 400 years ago, right? You said, how did he fly? Right? We just don't have any understanding of a technology of that time. The context is important. To know the time and to appreciate it, what did Indians do? How many of you know, yes, Indians have done something, we always hear Aryabhata, Surya Siddhanta, but how many of you know that the Indian astronomy is not, I'm not using the word one of the sophisticated, no. Indian astronomy is the sophisticated astronomy in the world, and some of the features of Indian astronomy, such as Surya Siddhanta, are not understood by current top astronomers even to this day. Let me tell you a good news. And this morning, a former ISRO scientist, now he's in America in Washington DC, and myself, we submitted a paper on this very subject that I just mentioned to a peer-reviewed journal. So now, of course, it will take 6 months to 1 year before it gets published. Okay? That's what it is. This is not exaggeration. And we should not exaggerate. We don't need to exaggerate. But astronomy is time. India has developed a very sophisticated astronomy. Astronomy is time. So now we know what is happening, what was happening, when it was happening. And now we need somebody to tell us. Well, that actually we all of us know. The Rishi tradition, the Rishi Parampara, like Ganeshwari Didiji is here and many other great sages are here, Mahanubhava are here. Rishi Parampara, not only is that somebody composes it, but then somebody preserves it. If the great tradition of India, Rishi tradition, the wisdom tradition had not preserved, someone like me or many other researchers, many of us, the Ramayana and Mahabharata researchers, we had nothing to work on. So we need a language that is capable with a low drift. We need to understand the time, astronomy is time, and then we need a wisdom tradition. These three together creates things like Ramayana. These three together creates things like Mahabharata. Mahabharata is a soft power, Ramayana is a soft power. But my last statement, Sanskrit itself, astronomy itself, and our wisdom tradition itself, each of them are soft powers. Jai Sri Ram. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलेश नीलकांत ओक, जिन्होंने अवगत कराया कि यात्राओं की यात्रा, इतिहास, उसको समझना, भाषा ऐसी होना चाहिए जो स्थिर हो, संस्कृत जैसी, राम की सौम्य शक्ति। तभी तो हम जान सकेंगे जब वाल्मीकि को पढ़ेंगे जो रामायण काल में थे, व्यास जी जो उसी महाभारत काल में थे। आपने कहा कि तत्कालीन तकनीक, परिस्थिति और अनुभव को जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे सूर्य सिद्धांत का आपने वर्णन किया कि सूर्य सिद्धांत को अभी भी वे वैज्ञानिक न जान सके हैं, और इसके साथ ही मैं उन्हें पुनः धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट प्रोफेसर जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम कनाडा टू प्लीज felicitate the
two speakers. Yes, Two please. speakers. And also, Dr. Jiten Jamdar will sum up this session from the dais. Yes. And after that, we will have a small lunch break for 15 minutes. Whatever you can have in 15 minutes, please have and come here, back. Good afternoon, everybody. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव कहते हैं कि दुनिया में जितने नाम हैं, हजारों लाखों करोड़ों नाम होंगे, अकेले राम नाम में वो सारे समाहित हो जाते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अखिलेश कि आप, हमारे अजय भाई, हमारी दीदी ज्ञानेश्वरी और यहां पर जो पूरी टीम लगी हुई है, वो इतना अद्भुत काम कर रहे हैं कि पूरा विश्व आपके प्रति कृतज्ञता से नतमस्तक है। एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। मंच पर जेफरी आर्मस्ट्रांग जैसे लोग विराजमान हैं, जिन्होंने हमारे धर्म को, हमारे तत्व को, हमारे चिंतन को, हमारे दर्शन को गंभीरता से गहराई तक जाकर के उसको समझा है। He has gone in wonderful depths of our philosophy, our religion, our spirituality, and has come up with such a wonderful book. Once again, a good round of applause for such a wonderful person. मनोज श्रीवास्तव जी के प्रति मेरे भाव पिछले अनेक वर्षों से बदले नहीं हैं। जिस विषय को स्पर्श करते हैं, उस विषय की सूक्ष्म व्याख्या, सूक्ष्मतम व्याख्या में वो उतर जाते हैं। और जब वो बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक शब्द अपने आप निकल कर आ रहा है और प्रत्येक शब्द कुछ कहने को आतुर है। यह आपकी खासियत है मनोज जी। नीलेश का मैं बहुत पुराना पंखा हूं, मैं बहुत ज़बरदस्त फैन हूं और नीलेश जी के लगभग सभी YouTube वीडियोस मैंने देखे हैं। और इसलिए मैंने खुद अखिलेश से निवेदन किया कि जब नीलेश का सत्र हो तो उसके बाद मैं जरूर 2 शब्द कहना चाहता हूं। यहां बैठे हुए ज़्यादातर लोगों ने शायद नीलेश जी के YouTube वीडियोस को नहीं देखा होगा। मराठी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में होते हैं, पर आप सबको एक बात मैं प्रमुखता से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जो पारंपरिक भारतीय चिंतन है महाभारत और रामायण काल के बारे में, उन दोनों अवधारणाओं को नीलेश जी ने बहुत मजबूती के साथ चैलेंज किया है। आप में से शायद कुछ ही लोगों को मालूम होगा कि नीलेश जी ने राम रावण युद्ध की तिथि लगभग 12,900 वर्ष पूर्व निर्धारित की है और केवल एस्ट्रोनॉमी के आधार पर नहीं, तो एस्ट्रोनॉमी के साथ लगभग 20 प्रकार के और एविडेंसेस, जिसमें हर प्रकार के एविडेंस को उन्होंने कंसीडर किया है। हिस्टोरिकल है, जियोग्राफिकल है, जियोपॉलिटिकल है और सब प्रकार के, और सबको लेकर और 12,900 वर्ष पूर्व रामायण मतलब राम रावण युद्ध और लगभग 7,000 वर्ष पूर्व आपने महाभारत काल को प्रतिपादित किया है। इस विषय पे पूरे विश्व में शास्त्रार्थ चल रहा है इस समय, क्योंकि हमारा जो पारंपरिक चिंतन है, हम कहते हैं कि हमारा कलियुगाब्द लगभग 5,000 वर्ष के आसपास है और इस 5,000 वर्ष के कलियुगाब्द को 2,000 वर्ष और जोड़ करके आपने कहा कि कली का प्रवेश दुर्योधन की मृत्यु के साथ हुआ और जिस दिन दुर्योधन की मृत्यु हुई उसकी तारीख, उसका दिन, उसका क्षण आपने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया हुआ है। और इसलिए एक बार फिर इन दोनों विद्वानों के लिए तालियां। अब हमारे श्रीलंका के मंत्री जी चले गए, मैं सिर्फ उनको इतना स्मरण दिलाना चाहता हूं
कि श्रीलंका या लंका हम जिसको कहते हैं वो रावण की लंका नहीं है, वो अलग चीज है। आपका विषय नहीं ले रहा हूं मैं अभी। नीलेश जी तो उस बारे में और ही कुछ कहते हैं। नीलेश जी तो कहते हैं कि वो आज जो लंका है वो रावण की लंका है ही नहीं, वो एक अलग विषय है, बहुत विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। पर वास्तव में जो लंका थी वो रावण की नहीं, वो कुबेर की लंका थी। और काल का चक्र देखिए, कलयुग की स्थिति देखिए कि कुबेर की लंका, धन के पति, पूरे विश्व के सारे धनी जिनको प्रणाम करते हैं, उनके क्षेत्र में आज ये स्थिति है कलयुग के चलते कि उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों के सामने उनको हाथ फैलाना पड़ते हैं। और वही चीज रावण के बारे में, रावण कामी था, रावण सब कुछ था, पर हम ये ना भूलें कि रावण जय का अवतार था। उसकी जड़ें कहां थी? उसकी जड़ उसके पूर्व जन्म में थी। वो जय था, कुंभकर्ण विजय था पूर्व जन्म में। और इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर के रावण कुंभकर्ण को हटाकर जय और विजय को स्थापित करने की आवश्यकता है। आज के इस सत्र में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम शीघ्र ही लंच के बाद यहाँ पुनः उपस्थित होंगे। अच्छा, एक मिनट, फेलिसिटेशन होगा जी। जितेंद्र जी से अनुरोध है कि वे सभी स्पीकर्स का सम्मान करेंगे। श्री जितेंद्र जामदार जी, आप सभी स्पीकर्स को अंगवस्त्र से सम्मानित करेंगे। In 15 minutes time, we will be reaching again. So just leave the hall immediately and rush to the plates. I will ask the caterers to help all of us. Delegates and faculty members are requested to please go to Ashoka Hotel, and volunteers will go on the right side and come back again soon.